Hello parents, how are you? First of all, I welcome all the parents into this beautiful session. आप इस सैटरडे की आफ्टरनून को हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे पेरेंटिंग के बारे में। सो जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत इजी बनाएगा। सो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप हर दोपहर को क्या करते हैं या सैटरडे की दोपहर को आफ्टरनून को क्या करते हैं? अगर आप यहाँ नहीं होते तो क्या करते, क्या मैं ये जान सकती हूँ? Generally, I am doing work at that time, some official work, and that so I can write. I am doing work. I am doing my work. So, all parents, please write your answers in chat box. Okay. Someone I want to say homework. Anyone else? Okay, no matter. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के बारे में। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? क्या हम सिर्फ जो बोलते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, या फिर किसी कोई और चीज भी आती है इसमें? और क्या इम्पोर्टेंस है? यही सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमने ये कम्युनिकेशन वर्कशॉप डिजाइन किया है। तो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने को नहीं कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तरह से बोलने को कहते हैं। हमारे दिमाग में जो भी आइडिया है या फिर जो भी क्रिएटिविटी है, अगर वो आइडिया या कोई भी थॉट वो हम दूसरों को अच्छी तरह से या अच्छे इम्प्लीमेंटेशन से ना समझा सके तो वो उतने उतना इम्पेक्ट नहीं करता है उनके माइंड पर। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इस युग में, डिजिटल युग में, जिसमें समझाना बहुत जरूरी है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आज से ही हम अपने किड्स को ये कम्युनिकेशन के थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर दे तो वो जब बड़े होंगे या जब एक लेवल पर पहुंचेंगे तो उनका स्टेज फियर है या जो स्पीच फियर है या कोई भी ऐसा फियर उनके मन में अंदर नहीं रहेगा, और वो इजीली कम्युनिकेट करके अपना आइडिया, अपने थॉट्स, अपनी क्रिएटिविटी सबको दे सकेंगे, और वो सक्सेसफुल बनने में भी बहुत हेल्प करता है। ओके, तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है वर्ड। सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से। तो उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे वर्ड। वर्ड किससे आते हैं? एनीवन कैन गेस? ओके, तो वर्ड, हम अच्छे वर्ड्स कब यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास अगर बहुत सारी वोकेबलरी हो तो ही हम अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और वोकेबलरी हम किससे बढ़ा सकते हैं? तो उसके तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर सिर्फ बच्चों के लिए या किड्स के लिए ज्यादा इम्प्लीमेंट अगर कोई है तो वो है फ्लैश कार्ड। हम फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उनकी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसके बारे में कल्पेश सर आपको ज्यादा बताएंगे। सो आई Okay, Vishwa, thank you very much for inviting me to have this conversation. And yes, everyone, welcome to the session. And let me tell you that we as a Spartan Kids, what we do exactly. So we ensure कि हम ऐसी products बनाएं जिससे कि आपके जो बच्चे हैं उसकी communication skills अच्छी हो, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी सेंसेस काफी अच्छी डेवलप हो, एंड बहुत सारी चीजें हम करते हैं। एंड आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च वी कम अप विद सो मेनी डिफरेंट आइडियाज इनटू द प्रोडक्ट। एंड उसमें एक जो बहुत ही इम्प्लीमेंटेबल और साइंटिफिकली प्रूवन आइडिया है, दैट इज यूज ऑफ द फ्लैश कार्ड्स. Okay, so we do the manufacture the flashcards and we sell the flashcards, and flashcard actually improves
कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। वोकेबलरी तो बढ़ाता ही है, बट उससे भी बढ़िया उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, जो सुनने से, जो एक्टिविटीज से, वो बहुत सारी चीजें हम फ्लैश कार्ड थ्रू कर सकते हैं। एंड दैट्स वेयर वी स्टैंड, वी आर स्पार्टन किड्स, एज वी आर मैन्युफैक्चरिंग सो मेनी थिंग्स, जो कि आपकी बच्चों की जो चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नी है, आपकी जो पेरेंटिंग जर्नी है, उसको इजी बनाए। एंड यस Vishwa, that's what I would like to share about the flashcard. You can carry forward, and anyway, Yes, you are doing fantastic job. मतलब आप जिस तरह से carry out कर रही है session. Yes. I want to say something. Because of some technical issue, I can't change my slide. So please, can you share screen? Yeah, let me share my screen. No issues. Okay. Okay, everyone, my screen is shared with you people. Is it visible to all of you? Yes, it's visible for me. I think it's visible for here. Yeah, if it is visible, you can write in the chat box visible, visible, please. Okay, thank you very much. I'm getting a response. Thank you very much, iPhone, whoever it is. Your name is very sweet, iPhone. Rachna ji, thank you very much for your response. Yeah. So, we as a Spartans, we stand into the market with the products, but we also wanted to, bring some different experience to our customer, as well as all the people who are connected with us. So we come up with the idea as a Spartan Parenting Academy. Okay, हमारी प्रोडक्ट तो काफी अच्छी है, एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू पीपल दैट सम ऑफ द क्लाइंट्स हैव, हमारे जो कस्टमर है उनके बच्चों ने सिर्फ 6 महीने का, अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस स्टडी आया था जिसमें सिर्फ 6 मंथ्स में एक बच्चे ने तकरीबन 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने रजिस्टर किए with the use of flashcards. Okay, so product is fantastic, but we also wanted to give something to our customer, and that's where we have started this initiative known as a Spartan Parenting Academy, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि हम different activities करते हैं, activities like पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं. राइट नाउ यू आर इन द वन ऑफ द वर्कशॉप. हम इंटरव्यूज लेते हैं पीडियाट्रिशियंस के, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के, स्पीच थेरापिस्ट के, ऐसे बहुत सारे लोगों के जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ काम किया है, या तो फिर वो पेरेंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. उनके हम इंटरव्यूज लेते हैं, उसको हम यूट्यूब और पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते हैं, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन एक्सेस ऑल दिस थिंग्स. वेबिनार, ऑनलाइन वर्कशॉप भी हम करते हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप भी हम करते हैं. ओके, एंड इस पूरे इनिशिएटिव का एक ही मकसद है, दैट वी वांट टू मेक योर पेरेंटिंग जर्नी जॉयफुल, वी वांट टू मेक योर पेरेंटिंग जर्नी फन एंड इजी. बहुत सारा केओस है, बहुत, जब आप सर्च करते हैं आजकल, कितने लोगों को इतना ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, ओके, तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग, मतलब आपके सामने फैक्ट्स आ जाते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन. So if you have any such kind of experience with the Google, please write into the chat box. अगर आपको ऐसा कुछ है तो please write yes. आपने अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो write yes into the chat box. कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, राइट? ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द गूगल जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है. सो दैट्स व्हाई वी कनेक्ट विद द रियल पीपल, ओके, एंड वी ब्रिंग अप देयर ओन एक्सपीरियंसेस. कोई बुकिश बातें नहीं, हम उसके ओन एक्सपीरियंसेस आपके तक पहुंचाते हैं. एंड यस, एंड दैट्स वेयर वी अवर स्टैंड लाइज कि हमें कुछ देना है आप लोगों को. एंड यस, इफ यू वांट टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल दिस थिंग्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. हमारे फेसबुक ग्रुप में हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू पीपल ऑल ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप. राइट नाउ आवर टीम हैज शेयर्ड द लिंक इनटू द चैट बॉक्स. ओके, स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी, उस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज अवर टीम. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट टीम टू शेयर द यूट्यूब चैनल लिंक सो दैट पीपल कैन डायरेक्टली ज्वाइन अवर चैनल, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. यस, ओके, I would request everyone to please mute down so that we can okay, thank you very much. Yes, after this I would like to say something about the communication. Okay, yes, what do you people think, what is communication? Communication कितने टाइप के communication होते हैं? जैसे अभी हम कर रहे हैं, that is verbal communication. How many type of communications are there? If anyone can write into the chat box.
Yes, there is verbal. Okay, child. Okay, okay, baby communicate through crying. Yes, exactly. Baby communicate through crying. So facial, verbal, फिजिकल हम जो जेस्चर है वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है. कभी आपने देखा है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, मतलब आप किसी के सामने सिर्फ मतलब आप देखते हो तो भी आपका एक मैसेज जो है वो पास ऑन हो जाता है, ओके, सामने वाले के पास. सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. यस, सो आई वुड सजेस्ट दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि वो सारे तरह के कम्युनिकेशन हमारे जो हमारे बच्चे हैं उन तक कैसे पहुंचे, उन तक कैसे पहुंचा है. तो वो पहुंचाने के लिए वी डू हैव वन ऑफ द पेरेंटिंग एक्सपर्ट, वन ऑफ द पेरेंटिंग मेंटर विथ अस, ओके, who is none other than Anita ji. Okay, she is with us since हमने जब से ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है तब से वो हमारे साथ है. Okay, she is having more than 12 years of experience and उससे भी ज्यादा she love to be with the kids, she love to observe the things और सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वो करना चाहता है. एंड दैट्स वेयर she has started this all these things कि जहाँ पे वो अपनी एक खुद की प्री स्कूल चलाते हैं. she is a founder of Little Genesis school into the Bangalore and उस स्कूल ने अवार्ड्स विन किए हैं. ओके, काफी अवार्ड्स विन किए. few of the awards are written over here like top promising preschool into the Bangalore, best preschool especially into the interactive and innovative curriculum, and she is a founder of that preschool. She is also director of Empowered Mind EDU Solutions, and we have the privilege कि वो हमारे साथ जुड़े हैं. आज नहीं, जब से ये कंसेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ है तब से स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी जब से है तब से वो हमारे साथ है. And this whole workshop will be taken by this expert, this parenting mentor, कि जो आपको बहुत सारे पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. शी अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी वेल, इतने डेप्थ से अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज शी इज इनटू दिस दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. And yes, she will be doing all the session with you people and give you all the insights. Meanwhile, आज के सेशन में आप लोगों को at the end of the session, okay, we will be giving you some of the gifts. Okay, आपको कुछ हम गिफ्ट देने वाले हैं, 2 से 3 अलग अलग गिफ्ट है जो आपको मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, I would also like to mention that we have ran one of the poll. Okay, one of the quiz, I believe. Not quiz. What was that actually? Father baby competition something, right, Vishwa? Yes. Okay, so there was one competition जो हमने अपने WhatsApp ग्रुप में चलाई थी. तो उस कंपटीशन के जो विनर है उसको भी हम यहाँ पे आज हम अनाउंस करेंगे. एंड यू ऑल विल बी हैविंग अ वंडरफुल गिफ्ट बाय द एंड ऑफ द सेशन. सो बी विथ अस एंड जस्ट लर्न हाउ यू कैन मेक योर पेरेंटिंग जर्नी फन. एंड यस, अनीता जी, ओवर टू यू नाउ. Anita ma'am, you are there? Hello. Thank you. Yeah. Yes. Hello. Yeah, am I audible? Am I visible? Yes, ma'am, you are audible and you are visible. Thank you so much. And thank you so much for that kind introduction. It means a lot. Welcome, parents. I can see only one video which is on. Okay, Rajeshwari ji. So thank you so much. So keeping your video on. In case everyone else also can keep your video on or off, that is your choice. However you are comfortable. So आज की वर्कशॉप का जैसे कि आप जानते हैं, इट्स टाइटल ओनली कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन क्या है और कैसे हम अपने बच्चों की कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते, उससे पहले हमें कम्युनिकेट करना है. So I hope we all will be super active, super energetic throughout the workshop today. Yes, जब हम communicate कर पाएंगे तभी हम अपने बच्चों को communication सिखा पाएंगे, isn't it? पहले हमें करना है कि कैसे communicate करना है, क्या करना है. So I want every parent, every father, mother, caretaker, who all are there in this room today have to communicate as and when we are asking you to do something. Is that fine? Can you all write in the chat box? Yes. So first we have to communicate, right? Communication skill कहाँ से build होगी? जब हम communicate करेंगे. Yes. Exactly. Yes. We are getting the answers. Yeah.
Yes. So I have one, can you see one paper here? I just tear it with my, from one of my book. Okay. Just to show you something. Can you all see here one paper? Okay. So, or a child. ठीक है, आपको अज्यूम करना है ये पेपर एक पर्सन या एक बच्चा है. ओके. और आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी बात आती है, अच्छा बुरा, आप कभी कभी हम बच्चों को बोल भी देते हैं नॉटी हो आप, या जो भी आपके मन में आती, एक आप वर्ड बोलेंगे और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज इट इज अबाउट कम्युनिकेशन टुडे. सो एवरीवन हैव टू कम्युनिकेट. यस. एक वर्ड आपको जरूर बोलना है. And once you say something, I will do like this. Okay. मैं इस पेपर को एक साथ में गैदर करूंगी. जो जो आप वर्ड बोलेंगे, एक एक वर्ड बोलेंगे, एक एक वर्ड पे मैं गैदर करूंगी पेपर को. Is that fine? Yes. That is fine, ma'am. Meanwhile, I would like to inform you somewhere your voice is breaking, might be network issue or something. So right now it is completely okay. आप जब एक्सप्लेन कर रही थी तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था. सो इफ यू कैन एक्सप्लेन अगेन, दैट इज कंप्लीट. Okay, दैट विल sure. डू. Yes. So, dear parents, मेरे पास एक पेपर है. उसके ये पेपर को हमें अज्यूम करना है, दिस पेपर इज अ पर्सन और अ चाइल्ड. ठीक है. और आपको एक वर्ड बोलना है. ठीक है. जो भी आपको लगे, आपके मन में जो भी वर्ड आता है, यू वांट टू एड्रेस योर चाइल्ड विथ समथिंग गुड, और आई विल नॉट से बैड, बट समथिंग व्हेन इट कम्स लाइक मेरा बच्चा आज नॉटी है, कुछ वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. एनीथिंग लाइक दैट यू हैव टू टेल वंस. और इस पेपर को मैं एक बार क्रम्बल करूंगी. ऐसे जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार क्रम्बल करूंगी. ओके. इज इट फाइन? One of the Is it parent clear asked now? whether it is sentence or a word. Only one word. Only one word. Okay. 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 Let's Bhumika start ji, it with is only Kalpeshi. word. Yeah. Okay. Let's start with Oh. Kalpeshi. Smart. Okay. Next. Vishwa, you can Yes, start. I'm Naughty. waiting, Vishwa. Can you? Naughty. Naughty. Oh. Okay. Then next. Rachana ji, written into the chat box. Good. Good. Happy. I can see in the chat box. Yes. Good, happy. Then beautiful. Ji says beautiful. Yes. Beautiful. Okay. Amazing. Okay. Then great. One more. Amazing. Sad. Okay. Anything else you have? I think that's it. Okay. ये पेपर को अभी मैं खोल रही हूँ. हमने एक एक वर्ड बोला और उस हिसाब से पेपर को क्रम्बल किया. ठीक है. नाउ लुक एट दिस पेपर. इज इट द सेम जो जब मैंने स्टार्ट किया था? क्या वो सेम पेपर? तो पेपर सेम है, बट द व्यू ऑफ दिस पेपर इज सेम. यस और नो? नो. राइट. हमने जो भी बोला इस पेपर ने भी ऑब्जर्व कर लिया और इसका लुक वैसे ही बदल गया. करेक्ट. यस. तो इस एक्टिविटी से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, हम कुछ भी हम बोलते हैं अपने बच्चों को, या इन आर वे ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम किसी से भी बात करते हैं, हम कभी जाने अनजाने में जो भी हम वर्ड या कोई भी एक एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी के बारे में, वो ऑब्जर्व करता है एंड it stays there only. Good or bad, positive or negative, जब हम कुछ भी यूज करते हैं वो वहीं पे अपना मार्क छोड़ता है. करेक्ट. सो what we want our child to do and what we want our child to observe. Yes, we want our child to observe all good things, right? Yes. So हम जब अपने बच्चों को कुछ भी बोलते हैं, we have to be really conscious and cautious कि हम अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं. Fine. I hope this activity really helps everyone. Yes. एक पेपर पे ही उसके मार्किंग आप देख सकते हैं. The paper is not same how it was. तो जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कोई भी लेबल देते हैं, तो वो लेबल उसके दिमाग में, उसके दिल में रह जाता है. करेक्ट. एंड इट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट लीव्स दैट मार्क फॉर लॉन्गर पीरियड.
सो जो भी हम अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हमें प्रॉपर लेबलिंग उन बच्चों को करनी है. दैट्स वेयर वी कैन अचीव आवर गोल. होप इट्स ऑल फाइन. ओके, वेरी गुड. सो कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट, और सर आप प्रेजेंट करेंगे स्लाइड. Let's dive into our workshop, today's workshop, communication skill. Shall I, or shall I give you the rights one? You are already a host. Just a minute. I Yeah, am, you are is a it? host. Yeah, yeah. 1 second. Start a presentation mode. Everything else is fine. Your screen is visible. Okay. Yeah. Okay, let's dive into workshop of today. Communication skill. जैसा कि आज की स्टार्टिंग में ही कल्पेश जी ने बोला, कम्युनिकेशन स्किल में कौन से फॉर्मेट यूज होते हैं. देयर आर 2 फॉर्मेट एक्चुअली. ओके, वर्बल एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं. वर्बल कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपके हिसाब से, हम जो भी पेरेंट्स यहाँ पे इस रूम में हैं आज, आपके हिसाब से ओनली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब बच्चा, आई मीन टू से, जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, कि वो बच्चा बोल के बताएगा, एक्सप्रेस करके बताएगा, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस यूज करेगा. दैट इज व्हाट वर्बल कम्युनिकेशन इज, राइट. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम अपनी मदर टंग या कोई भी लैंग्वेज जो हमें कंफर्टेबल होती है, उसमें हमारी फीलिंग, हमारे एक्सप्रेशन, हम जो कहना चाहते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वर्ड्स टू अदर पर्सन. दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. करेक्ट. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इंग्लिश में, हिंदी में, विथ एक्सप्रेशन, विथ गेस्चर्स एंड ऑल. दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. यस, मैं अपनी बात को एक वर्ड्स में, सेंटेंस में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ. दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. So only verbal communication is helpful for our children, or non-verbal communication also. So non-verbal communication, if you are aware about non-verbal, where we use minimum or less or no words also sometimes, especially all, we are all mothers. Most of the parents here are mothers. Yes, तो आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा when you talk with your husband, so without much words and all also, आपके एक्सप्रेशन से भी आप भी समझ जाते हैं अपनी बात, आप जो बोलना चाहते हैं, और आपके हस्बैंड भी समझ जाते हैं. एक अच्छा सा लुक दे दे तो भी समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाहती है आज, ये आज उसका मूड कैसा है वो भी समझ में आ जाता है. करेक्ट. आज खाने में नमक ज्यादा या मिर्ची ज्यादा मिलेगी, या बैलेंस मिलेगी, कम मिलेगी, वो अच्छे से समझ में आ जाता है. करेक्ट. सो हाउ इज दैट विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो बच्चे भी, देर आर थिंग्स where there are situation, there are atmosphere, जहां बच्चे non verbally also tells us many things. Yes, so first emotion is crying, as you all mentioned at the start of this workshop. First emotion is crying, where child doesn't use any verbal communication. जब बच्चा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि बच्चे को ये चीज की जरूरत है, बच्चा ये मांग रहा है, ये खाने के लिए, उस खाने के लिए, खेलने के लिए, ये चीज उसको जरूरत है. करेक्ट. So that is non-verbal communication. Yes. And what is exactly, first हम अगर start करना चाहें इस टॉपिक को, what is exactly communication is. Okay. So when we have to say something, okay, when we have to express something, when we have to deliver our thought process and to a person where the person also can understand well कि ये चीज की उसी जरूरत है, ये उसकी आइडिया है, ये उसका थॉट प्रोसेस है, and that person is able to convey that message to other person who is listening to that person. That is what communication, and that is what effective communication is. Yes, hope you all agree with that. Yes. So अगर हम अपनी बात को, अपनी आइडियाज को
अपने थॉट प्रोसेस को एक अच्छे वर्ड्स में, अच्छे सेंटेंस में, थ्रू द एक्सप्रेशन एंड गेस्चर किसी हम बोल पाए, दैट इज व्हाट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज. एंड दिस आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो आपके यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, मदर्स, फादर्स, एवरीवन, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और आज समझ आते हैं कि मेरे बच्चे को ये चीज की जरूरत है. यस, डू यू ऑल फेस दिस? डू यू ऑल एक्सपीरियंस दिस? Especially mothers, we have one instinct that is our special quality, what I can say as a mother. जो बच्चा कुछ बोले या ना बोले, फिर भी हम समझ आते हैं, हाँ इस समय पे, इस वक्त और इस टाइम पे बच्चे को ये जरूरत है. We all understand that. Yes. Most of the time when toddlers हैं, infants हैं, उस टाइम पे मदर्स जितना समझती है, इनफैक्ट जब भी बच्चा बात करना शुरू करता है उस टाइम पे भी वो लैंग्वेज ना मदर्स जितना समझती है उतना फादर या फिर दूसरे लोग भी नहीं समझते कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है बच्चा, राइट? Yes, correct. And that's how that mother will be a first person to understand. Mother will be the first person to understand verbal communication or non-verbal communication. क्या मेरे बच्चे को इस चीज की या इस चीज की विश है या ये चीज वो मांग रहा है और ये चीज की उसको जरूरत है. Correct. So this is the two form and two types of communication. Let's go to the next segment of today's workshop, pre-linguistic skills. So there are pre-linguistic skills as well. कोई भी चीज को हम करना चाहते हैं उसके लिए there are prerequisites also. कि ये चीज को हमें सीखना है, उससे पहले हमें ये तैयारी करनी है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप once we go to that, once we follow those steps, that is where we can achieve that. Yes, that is how we learn, that is how the process of learning happens. So communication also, there is a process and there is a pre-linguistic skill as well. Initiate environmental talk. When we go with the child somewhere, or like in a garden or a mall or at our friend's house, okay, so what do we do as generally? What do we do? हमारा जो काम है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमें जिससे मिलना है, we generally only focus on that. Okay, so initiate कैसे करना है वो communication skill को. Allow child also to talk. If the child is not able to talk much, at least 1 or 2 words, allow child to talk about 1 or 2 words also. And once you are back home after visiting to the place where you have went, after that ask child some questions about it. Okay, आप कहाँ गए थे, आप किससे मिले, आपने किससे बात करी, आपको वहाँ कैसा लगा? That is how you can initiate that talk. हम उस बारे में बच्चे का यहाँ पे माइंड स्टिमुलेट होगा कि हम कहाँ गए थे, हमने क्या देखा था, हम किससे मिले थे. वो एक बच्चे को एक रूम मिलेगा, बच्चे को एक कंफर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो स्टार्ट करेगा थॉट प्रोसेस भी कि मैं गया कहाँ था, मुझे मिला कौन था, मैंने क्या बात करी थी. सो दैट इज अबाउट इन्वायरमेंटल टॉक कि हम गए कहाँ, हमने किससे बात करी, हमने क्या देखा वहां पे. Correct. There are so many things once you visit anywhere. There are so many things to observe, and sometimes our children will observe those things which is not been observed by us also. Yes. तो आप try करिए once you are there in that situation also, and once you are back also, कि बच्चे ने वहां पे क्या क्या ऑब्जर्व किया. that is the way you will understand कि बच्चे की ऑब्जर्वेंट स्किल भी कैसी है, बच्चा कितना ऑब्जर्व करता है और क्या क्या चीज माइन्यूट और मेजर थिंग ऑब्जर्व कर सकता है. yes, take turn during interaction. सो जनरली हम क्या करते हैं, जब बच्चे को कोई इनिशिएटिव देते हैं बोलने की या बच्चा कुछ बोलना चाहता है, तो हम बच्चे को जनरली वहां पे स्टॉप करते, एक पॉज करवाते हैं. ओके, द पॉज कैन बी वर्बली और पॉज कैन बी जस्ट शोइंग ओके वेट.
if the child has not finished talking also, बच्चे को अभी और भी कुछ बोलना है उस बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस कॉन्वर्जेशन के बारे में, बट हम एज अ चाइल्ड वी टेंड टू स्टॉप दैट चाइल्ड एंड पॉज दैट चाइल्ड देयर एंड देयर itself only. But what happens if in case that is the thing, चाइल्ड का जो थॉट प्रोसेस है वहां पे एक गैप आ जाता है, करेक्ट? जो एक फ्लो और एक थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वहां पे गैप आ जाता है, उसकी वजह से उसकी वोकैबुलरी और उसका थॉट प्रोसेस एक जगह पे रुक जाता है, करेक्ट? अगर उस थॉट प्रोसेस को हम encourage करें, उस कॉन्वर्जेशन को encourage करें, तो might be child might say so many other things also, he's observed, what is that he has observed. Yes, so try to minimize our pauses, कि बच्चे को हम रोकें, हम बच्चे को इस बात के लिए बस यहाँ तक ही आपको बोलना है, उस लिमिट के लिए रोकें. ट्राई टू मिनिमाइज आर पॉजेस, कि उस समय पे बच्चे को एक फ्लो जब वो क्रिएट और बिल्ड हुआ है, लेट द चाइल्ड फिनिश, देन यू स्टार्ट करेक्टिंग इन केस द करेक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, जब हम बच्चे को बात करते हैं, विल ट्राई टू फोकस ऑन देयर ग्रामेटिकली हाउ द सेंटेंस दे आर फॉर्म. बच्चे ने उस चीज को जिस चीज के बारे में बोल रहा है उस चीज को ठीक से प्रोनाउंस किया है कि नहीं किया है, और उस सिचुएशन को वो बच्चा ठीक से बोल पा रहा है कि नहीं, उस करेक्शन में हम बच्चे को पॉज करते जाते हैं, correct? So in case you need to do that, do it at the end of the conversation and minimize that pause, minimize that correction. Yes, so correction कम करेंगे, उस flow में बच्चा एक अपनी जो बात कहना और बोलना verbally और non verbally चाहता है, it becomes little easy for the child to convey that message. Yes, Can I interrupt, ma'am? yes, sure, Vishwa, please tell me. कभी कभी क्या हम बच्चों कोई किड बोल रहा है तो उसे हम अपनी बात पूरे किए बगैर ही उसे बीच में टोक देते हैं, तो उसे खुद भी अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा डाउन जैसा फील होता है. और अगर उसका सेंटेंस या वर्ड खत्म हो जाए उसके बाद हम उसे ऐसा कहें कि तुमने बोला ये कहा मुझे ये ठीक है, पर इस वर्ड की जगह ये वर्ड या इस सेंटेंस की जगह ये कोई दूसरा सेंटेंस अगर आपने यूज किया होता तो ये और भी अच्छा और भी इफेक्टिव लगता है, तो किड को भी अच्छा लगता है और हम भी अपना इंटेंस उन तक पहुंचा सकते हैं. करेक्ट, वेरी गुड, यस. सो दैट इज हाउ व्हाट हैपेंस ना, अगर हम बीच में उनको रोकते टोकते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस भी हैम्पर होता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ इट इज नॉट वैल्यूड, इट इज नॉट बीन हर्ड बाय एनीबडी. यस, दैट्स करेक्ट. या वेरी गुड, विश्वा. Next thing is that attention span. We have to develop their attention span. For building the attention span, dancing is very good activity. Okay, pause and dance. Okay, when you can play any music, whichever music you like, maybe rhymes, songs, or any other music also. जब body में heat and body में all the nerves get activated, okay, that is where attention span is more actually. Okay, during that time what we can do some freezing activity. दो movement करी, freeze, then start, दो movement करी, freeze, then start. That is where their attention span is also very active. And one more activity for building attention span is scribbling. For toddlers especially, it is a very good activity where the child is scribbling unconstructively. It is not constructed like ये figure है इसी में ही scribble करना है, not necessary. The child can do scribbling wherever and however the child wants on the paper, on the sheet. Okay, so that also builds a lot of attention span because it is directly connected with the eye perception and with the brain and with the hand. It is eye-hand coordination. Okay, so when scribbling also happens, allow and give them more opportunity for scribbling. So for during this activity also, when eye-hand coordination is happening, their attention span also builds. So that is also very much important for communication skill. Communication हम कैसे होता है, कोई भी चीज हम पहले हम आंखों से देखते हैं,
थॉट प्रोसेस होता है वो ब्रेन में, माइंड में, हमारे माइंड तक वो सिग्नल, वो कमांड जाता है, एंड विथ ऑडिटरी हेल्प वी स्पीक अबाउट इट, राइट? कि ये चीज मैंने देखी है, ये चीज का मैंने प्रोसेस किया है, एंड दिस इज व्हाट द कमांड आई हैव गिवन टू माय माइंड, एंड दिस इज द वे आई हैव टू एक्सप्रेस माय फीलिंग. So it is again connected with the brain shells. Okay, so brains में जो shells होते हैं उसको attention span में improve करने के लिए we are suggesting two important activity, that is first is dancing and the second is scribbling. So that will help our child's attention span, and once the attention span is built, it is easy and simple for the child to communicate what she or he is feeling, right? Communication is basically about feeling, right? So agar becomes little easy for the child to express as well. Okay, so let's go for the next, appropriate play material. So as we are all parent here, we all know what are the importance of the play material. Yes, play material appropriate होने बहुत जरूरी है, as per their age, as per their capability, as per the child's potential. अगर play material अगर उस चीज को हम choose और उस चीज को हम select करते हैं, तो that gives the child a platform to speak about it. Yes, I'm sorry. Yes. So that gives a child a room, a platform to speak about it. Yeah. When child is in their own mood and all, child sometimes builds something with whatever material he has. Okay. कुछ extraordinary, कुछ extra stacking, कुछ extra way of presentation he builds and he comes and share with us. Okay. How is that happening? He must have seen, he must have explored, he must have observed something somewhere. That is why, that is a way the child is trying to say, ये चीज मैंने देखी और this is what I made it. With my toy material, whatever I have, with those toy material, I have made this. And that is where you minimize your answers. Let the child speak about it. बच्चे ने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कहाँ उसने वो चीज देखी है, कौन से कलर में देखी है, कौन से साइज में देखी है. Sorry. Allow child to speak about it. Your questions and your answers should be minimized towards it, but allow child to speak about it. ये चीज मैंने यहाँ देखी थी, that is why I can relate that, and that is why I made this. Yes. So I think most of the parents here, those you must have experienced. कभी अनएक्सपेक्टेडली बच्चे ने कोई भी चीज या तो स्क्रिबल करी है या अपनी टॉय मटेरियल से बना दी है, जो हम भी नहीं सोच सकते थे कि बच्चे ने वो चीज ऑब्जर्व भी करी, देखी भी है. करेक्ट दैट कि बच्चे ने वो चीज हमें बना के हमारे सामने प्रेजेंट करी है. It can be in their own way. It can be in their own way with whatever the toy material they have. Yes. So toy materials are very much important. How do you select? As per their age and as per their interest. Excuse me, Vishwa. Yes, Anita ma'am, you can have a glass full of water. And yes, everyone, I would like to inform you that Anita ji has little bit of cough, and still she is with us, and वो हमें अपना knowledge share कर रही है. So we really are grateful to her for all the things. Meanwhile, हमने अब तक जो कुछ भी चीजें देखी है उसके बारे में हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं. मतलब आप लोग हमें बताएं कि हम what are the points we have covered up till now. Okay, so the very first thing, we have understood the types of communication. So what are the types of communication? Can anyone share into the chat box? Yes, please. Verbal and non-verbal.
Verbal and non-verbal, Rajeshwari ji, very good, wonderful. And after that we went to the next topic, that is pre-linguistic skill, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी. Right now that portion is going on. So what are the things we understood? The very first point is, anyone can share into the chat box or the verbally, that is perfectly fine. अगर आप unmute करके बोलना चाहते हैं तो, if you are not able to share. Yeah, anyone? Okay, don't worry. I'll be sharing this into the chat box ताकि आप लोगों के पास उसकी notes रहे. But yes, meanwhile, yes, जो हमने सबसे पहला point देखा, that was non-verbal communication. Sorry, that was initiative. Initiate the environmental talks. हमें बच्चे के साथ initiate करना है. हमें इनिशिएटिव लेना है कि हम उसके साथ बात करें. एनवायरमेंटल टॉक मतलब हम कोई भी उसके साथ हमने चीज की है, हम कहीं पे बाहर गए, उसके बाद हम जब वापस आते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, उससे सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, बट उसके बहुत सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन पावर भी उसकी बढ़ेगी, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा. दूसरी बार बच्चा अवेयर रहेगा कि जब हम जा रहे हैं कहीं पे बाहर तो उसके बाद मुझे कम्युनिकेट करना है उसके बारे में, राइट? Then he will be also observe more, he will have a more concentration and all these things. Okay, wonderful. Yes, ask question. Yes, Rajeshwari ji, wonderful. The second point we understood is take a turn in the interaction. Okay, listen to the kids replay. Wonderful, great. Okay, and next is develop attention span. Wonderful, great. And the last right now, which is right now on the screen, is appropriate play material. Great. Thank you very much everyone for such a wonderful interaction. I must tell you, you people are awesome. आप लोग बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करते हैं. इट रियली मतलब मैं सिर्फ आपको फ्लैटर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट इट रियली हेल्प्स अस टू डिलीवर मोर, टू डिलीवर द क्वालिटी कंटेंट, टू बी मोर. हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा आपको देना चाहिए, बिकॉज यू पीपल आर ईगर टू हैव ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू वेरी मच. एंड आई बिलीव अनीता जी, यू आर फीलिंग बेटर नाउ. Yes. Thank you so much. Thank you so much for cooperation. Thank you so much. Yes. Yeah. Please. So let's go to the next segment of today's. Yes, and Anita ma'am, I must say, everyone is very wonderfully मतलब participating, और बहुत सारी चीजें जो आपने कराई वो सारी के सारे टॉपिक्स याद है सबको. Fantastic, very good. Yes. So before going to the next, 1 second, I'll stop my screen share. Okay, before going to the next segment, let's do again a communication activity between us. Okay. Yes, for this I want everyone to switch on their cameras. Can we all do that? Can we all switch on our cameras? Can I see all your smiles also? So we must appreciate Rajeshwari ji. She is right now having some kind of walk, I believe, and still she is on the camera. So yes. This is a visual communication. हम verbal communication की बात तो करते ही हैं, but visual communication is also visual important. Communication, so fantastic. Yes, Rajeshwari ji, I really appreciate that. Thank you so much. Yeah. I'm into this therapy session for my child. Okay. Yeah. So please, parents, I request you, in case you are comfortable, just for few seconds, I can say, not a minute also. Can we switch on our cameras? Or hello to you. Yes. Yes, right. Thank you so much. Thank you so much, Kids G. Thank you, Thank you Rachna so ji. much, Thank you, Divya ji. Rachna Thank ji. you. Nice to see you. Behind the cameras, actually, very beautiful smiles are there. Yes. Okay. So let's do one activity. Generally, हम numbers, especially numbers, जब हम बोलते हैं English में, okay, we really struggle to say in Hindi. Yes. Correct. So आज वही activity हम सबके साथ करेंगे. Little struggle, but we will try to do it. Okay. Yes. Will you all make it? Yes. Okay. So I will call out a number in English, and you have to answer, unmute yourself and answer fast in Hindi. Is that fine? Yes. Yes, So that is actually very easy, but
we lost the touch of Hindi numbers actually. नंबर समझ में आता, हिंदी में बोल दिया, अरे ये क्या बोल दिया, ये भी कोई ऐसा भी कोई नंबर है और ऐसा भी कोई वर्ड है, we really don't understand that much. So आज हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को कितनी हिंदी नंबर्स की नॉलेज है. Okay, fine. So I'll start with some easy numbers first. 11. 11. Yeah. Unmute yourself and just say 11. 11. Very good. 19. 19. If I say 19, what you should call it Hindi? 90. 19 number को हिंदी में, हाँ? 19 19 yes, yes, very good, very good. Yeah. Divya ji, that is completely. Yes, you are still confused. 19, Yeah. Divya ji, that is completely fine if you don't know Hindi. This is just a part of activity, nothing else. Just Yes. enjoy the activity, and after we will continue with the English. Okay. Yeah, it's just an activity, so don't get too much into it. If you know, you can answer. Okay. Next number is 27. 27. Very good, Rachna ji. Very good. Wait. Very good. Next number 49. 49. And we have. Sorry, Rajeshwari ji, can you repeat again? 39 No. 49. Fantastic. Very good. 39. 39 या 49. 49. 49, then 50. Yes. Okay. 39 is for that is 39. 39 is 39. Okay, let's go for the bigger number. 95. 95. 95. Yes, very good. Very good. And that was a prompt answer also. Very good, Rachna ji. Next, 67. 67. Sir. Very good. Yes. And 75. 75. 75. Very good. Fantastic. Last number. 88. I think this one is very tricky. 28 88. No. 88. 88. Yes. Yes. 88. Yes. Great. Wonderful. So it shows that हम हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम कितना मतलब भूल गए हैं, हमारे नंबर्स को भी हम इतने याद नहीं रखते. एंड दैट्स वेयर वी रियली अप्रिशिएट कि अगर हम अपनी ही लैंग्वेज को अप्रिशिएट करें, उसमें कम्युनिकेट ज्यादा करें, सो इट वुड बी बेटर, आई बिलीव. एनीवे, इट वाज अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर द कम्युनिकेशन, मतलब जल्दी से बात करने के लिए. थैंक यू. Yes. Thank you so much, everyone, for participation. So let's go back to our workshop now. Okay. Now let's see the next segment of today's workshop is approaches. So what are the approaches and what is the appropriate approach for communication, to build communication? It is PEUI. Approach. So what is this for? P. So अच्छा नया वर्ड्स कुछ बोलना ट्राई करता है. आई एम नॉट सेइंग सीखता है, ट्राई भी करता है. ओके, एनकरेज दैट. Anita ma'am. See, the thing is that how much ever we encourage. Yes, sorry. Anita ma'am, can you please repeat, because your voice was breaking, so काफी Is it लोगों को fine? समझ में नहीं आया आप exactly. PEUI फिर से आप बताएं. Here's P. This approach is PEUI. Yeah.
So the approach is PEUI. For this approach, P stands for produce. At the age of Ma'am, your voice is still breaking. so we call it as Can you change connection Is it- or something else we can do? the connection is poor, is it? It is a poor connection or is it fine? Now that's fine, but before that, Okay, when you start PUI approach, that is that time it was poor connection. Is it fine better now? यो वैसा हो रहा है मैम, जब आप बात कर रही है तब कोई इश्यू नहीं है, बट जब भी आप समझाना स्टार्ट करती है, दशहरे के दिन घोड़ा नहीं दौड़ता है. Okay. I think it is better now. It's stable now. It is stable now. It is perfect. You can go ahead, ma'am. Okay, sure. So, okay. So I'll repeat again. No issues. I'll repeat again. PEUI approach. So it is a PEUI approach. So we are talking about that. In this, P stands for produce. When the child starts producing certain sounds, okay, we have to encourage that sound production of that is called babbling. That is called babbling. How child will start babbling, ba, 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 like that. Child will not say a word also. It is just a sound what the child starts initially. Okay. Now, how to encourage that? How to encourage that? When child at that age, still the child is learning. There is no words is still has to come up. Okay. So when you have to approach, when you have to offer something, you have to name that. Suppose अगर अभी आप बच्चे को दे रहे हैं पानी, water you want to give, but from your end you have to specify water, take water, drink water. When you are giving food, when you are serving food, like that, you have to, production, when the child start producing sound, you have to clear that production of sound. जो भी आप बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, जो भी बच्चे को दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आपका क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसका क्लियर वर्ड होना चाहिए. Here what happens ना, जनरली हम क्या करते हैं, we like to see, everyone likes to emphasize on baby talks. Child might develop their own way of saying something in their acute way. Cute way in the sense, जनरली बच्चे वाटर को मम्मम बोलते हैं, या their own language में जो भी उनको ठीक लगता है वैसे बोलते हैं. And what happens ना, we also try to encourage that baby language. आपको मम्मम चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, आपको that word only will start repeating again and again. And we stick to that word only, कि मेरे बच्चे को अगर आप ये बोलेंगे तो ही उसको समझ में आता है. Correct? We generally do that. Yes. So it is okay for certain period. It is okay to stick to that baby language. But what we want child to understand and learn that specific word of their specific need, right? So you still try to say that the word what is appropriate. When the child needs water, tell, do you want water? Do you want to drink water? Yes, rather keep on saying the child language, the baby language, कि मम्मम चाहिए, आपको ये चाहिए, वो slowly that is only the word is getting registered, and that is only the word is repeated more and more oftenly. So वही word से वो चीज relate हो जाती है. Correct? Try to say proper words, not doing, try to say proper words of the proper things. When the child that thing, you have to still say the P approach, that is
produce sounds. When the child is producing different sounds. Okay. Now next E. E stands for expression. How the child is expressing. Okay. The way the child is expressing. It can be verbally, it can be non-verbally also. How the child is expressing. What are the gestures the child is using to say, to convey what he wants, what his feeling is. Okay. So emphasize on that. What is the gesture the child is using that, and what should gesture of doing that actually. Okay. So try to, in case child is not, try to define you are by doing the correct call E, that is for expression. Yes. Next one is U. U is understand. When we understand what child, and when you will able to make understand what the child needs, it is a better way for communication. Yes. Yes. End of it, what we want the child to do. The child has to say in words, express in words what the child wants. His feelings, his ideas, his thought process, everything, what we want. End of it, what we want child to express in words. Right? So understanding level should be at that the child can come and tell us, but we have to direct the child. This is what the proper wording is, this is what the proper expression is, and this is what the proper gesture is. So once the child understand the proper word, gesture, and how do I say for it, that is where they will understand, and that is where, in case that is a need, they will ask in a proper way as well. Okay. The last I stands for interaction. That is where we are here for this workshop, interaction. When this process start, when the production of the sound, then the expression, then understanding, then finally interaction will come. Yes, that is where the child can interact, what the child wants, what the child needs, and how we can communicate, how the child can communicate whatever his needs are. So this is what PEUI approach is. Produce, express, understand, and interact. Yes, hope this approach is very much clear with everyone. Once the child start producing the sound, then the expression comes, then understanding, then interaction. Okay. Hope this PEUI approach is clear with all the parents here. Yes. And we will work towards it. Yes. So for this approach, what and all activities we can do? Let us discuss about it. When show and tell. Suppose बच्चे की कोई भी बहुत ही favorite, it can be fruit, it can be vegetable, it can be book, it can be toy, it can be dress, or it can be any other thing also. Yes. So how you will start? Show and tell. We will sit with the child, and child has to say, once I am saying something, the child also has to add on to that. This is my favorite fruit. It can be mango. For example, mango. This is my favorite fruit. It is yellow or orange in color. It is very plumpy, and I get mangoes in summer season. So that is how the show and tell. Okay, that is how the conversation will be added to this conversation. One sentence you say, one sentence I will say, one sentence you will say. Slowly you will get to know how the child is thinking, what is their stimulation is happening, and how many words and how many sentences child can build with only one object. With only one object, there can be many sentences can be built, right? With mango, I can make mango juice. With mango, I can make pudding. Yes, I had mango at my friend's house. My friend bought mango in school. See, you have so many sentences with one object only. Yes. So with this, we can have show and tell activity. Yes.
Next activity is conversation, building conversation. How you will build conversation. So for that, we can play the child is sitting to the next side. Okay. Conversation is exactly what? There will be two-way process. Okay. With the one person who is saying, the other person who is understanding, listening to that, right? Yes. So we can have one ball. It is very handy for everyone. So if I am holding that ball, I will say one sentence on one word. Okay. Suppose as we are talking about mango fruit only. Okay. So let us say about fruits only. Mango. Once then I have to throw that ball to child. The child has to catch. Next fruit child has to say. Okay. It can be say watermelon. Then again it will pass on to the child. It can be grapes. Yes. What happens here? It is a way where we are restricting child to say on time also. When the ball is catch, when you hold the ball, you have to say something. So it is a speed stimulation of the mind. जब तक वो बॉल मेरे पास आती है तब तक मुझे मेरा वर्ड सोच के रखना है. ठीक है, मुझे क्या बोलना है. During that process, when the ball comes to me, within that time I have to think and tell. Yes, and it is building the conversation also. Yes, it is building the vocabulary as well, right? So you can start with a small sentences like what I gave the example with the fruits. Okay, small words, sorry. Then you can build this with the small sentences also. Today I had morning I had like a toast. Then you pass on the ball to the child. Yes, it was tasty. Then again it will be passed on to me. Yes, I had only 2 slices. Like that, it is a building of the conversation. It is building on that communication, and it is adding to that particular topic only. How much ever the child can think, and how much ever we can think, and how much ever the child can build the vocabulary. Yes, I hope these activities are clear and you will all try with this activity. Yes, parents, can you all write in the chat box yes or no? Whatever is your answer. Yeah, meanwhile, if you have any question regarding this activity, you can ask the question. And it was wonderful way, ma'am, to build a conversation, to build the vocabulary. And fun part, we have, you have shown the way कि हम कैसे fun part inject कर सकते हैं learning, Yes. right? Yes. So it was the perfect match, and we are getting the answers from everyone. Yeah, thank you very much. Very good. So, so here we, as Kalpesh ji bhi bol rahe. Okay, I believe there is a network glitch, not an issue. EUI approach, and these are the activities what you can do on a daily basis. Okay. So this can be, as I told you, show and tell, conversation build up, or passing the parcel also. If I have this question is coming to me, I have to say this, then it will be passed on to the other person. When that person has this question, now that person has to say this, it will be a passing the parcel as well. That is also a communication builder. Yes. So let's go to the next segment of. Madam, before we Yeah. go to the next level, I would like to share some of the things here over here. जो आपने जो approach बताया उसमें the one of the important point was the understanding. Okay, so as we understood, the very first level when the child starts to learn, okay, initially he will understand about the object. Okay, we will talk about some kind of object like ball के बारे में या फिर water के बारे में या फिर fruits के बारे में. The next level of that communication is he will be able to understand the activities what we are doing. Okay. Yes. How we are doing. Okay. And ultimate goal of any communication, किसी भी बच्चे को communication का ultimate goal क्या होता है? That how he feels, उसकी feelings और expression को वो express करे. Yes. And Yes. that's where exactly true essence lies of the communication. If the child is able to, communicate their feeling, how he is feeling, how she is feeling,
जबकि बहुत सारे बड़े लोग भी मतलब पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, राइट? सो दिस आर द 3 लेवल्स जहां से स्टार्ट होता है। तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग कि जहां पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, उसके बाद एक्टिविटीज के बारे में बात करें, एंड दैट्स वेयर वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, okay, at this point of time, what you are feeling, what kind of emotion you are having, and that's where the real communication, we can teach to our child. Yes. Okay. Fantastic. Yeah. To sum up this, it is very nicely what you have portrayed it. Very nice. Here I want to add one more thing. So generally, as we talk about communication, it is not about language. Okay. It is not about language कि communication करना है तो यही language में करना है. Communication is exactly what? It is expression. It is expression of emotion. So rather focusing on language, we have to focus on the expression, how it should be expressed. Yes. So hum as an educator or as a parent, generally abhi as per the new era, the trend is like my child has to speak in English only. He has to use these words only when it is coming to the communication also. Okay. See, what happens now, any language or any way is fine where if a child can express what is going on inside. So that acceptance is very much important. Okay. So rather focusing on language, we have to focus on the expression. How it is expressive and how it is been conveyed to the other person, where the person can understand this is what I am feeling and this is the way the other person can take the appropriate action also. Exactly. Yes. Yeah. So Yes. let us focus on that skill rather focusing on language. Yeah. So Great. now it's time to go for the next segment of today's workshop, Parents' Help for Child Communication. Now, as well from the start only, we are saying it is more about parent-centric skill. When we communicate, when we understand, that is where child can also do it, right? So with add on to all the other topics and all, building the foundation. The building foundation with the children is a prime platform for any activity or any skill to learn. Yeah. I request everyone, can we all stop scribbling on the screen? I can see some scribbling is happening. Yeah. Thank you so Madam, much. if you can, yeah, okay. Otherwise, if you can, stop screen sharing. Yeah, I think it is been so. Thank you so much. So building the foundation, that is the best and the prime platform what we as a parent, for any expression or any activity or any skill to develop. Communication is also a skill. Building foundation with our child, no matter what, no matter you make a mistake, no matter you are still learning the thing, you can still come to me and you can show, you can tell, I'm here to listen to you, I'm here to help you. That foundation, that comfort, that security child should feel. That is most important to build that foundation, that bond with and that connection with our child. Interaction is connecting. Okay. Connection, once you have a foundation built with the child, bond built with the child, definitely the interaction, that connection will happen. And definitely, see, during our some of the workshops also, what happens, there are certain things of our life, okay, when we feel, when we go through, correct, now I am taking this workshop, okay, but in case I get something good, bad, or whatever expression I have, I will feel like I have to share with that person. Why?
It can be my friend, it can be my children, it can be my family friend, it can be my husband or anybody. Why do I feel like that? Because I know that person is there for me. He will understand me, he will listen to me, and he will give me the correct solution also if I have some problem. Yes, we all feel like that in day to day. So why do we feel like that? We feel like I have to share this thing first to that person only. I will share this thing, my good or bad, whatever I am feeling now, I will go and share with that person only. Because I know that he will validate my feeling, he will validate my emotion, and he will be there to listen to me. That kind of connection what we have to build with our child. Yes. So if that connection is there with our child, definitely that child will come and tell us what has happened, what is there, what he has to express, and he will tell each and everything from the start till the end what he is feeling. So that kind of connection, that kind of foundation has to be built with our children. Yes. That excitement should be there, that I'm going to share this with my mother, I'm going to share this with my father. They will feel excited, they will feel happy, and they will, in case I have something to, if I am facing some problem also, they'll listen to me, and they'll give me the best solution as well. Yes. Yes, exactly. And that's where Okay. they start Now expressing here comes, everything. yes. Exactly. So here comes the most craziest, the funniest way of communicating. You can sing, you can play, you can tickle, you can run, go silly with your children, go silly with your any any which ways, whatever ways it comes to you, you have to keep talking, talk to the child. Okay. No matter if the child is sometime is not responding, if the child has not built the communication, the vocabulary skill also, but still he's observing what you are telling. Yes, he's still observing everything, all the words. As and when he'll build that speech, he will build that communication, he will start using all those words, all those sentences, all those expressions, gestures, everything. So never mind, in case you are waiting for the response might be later. On spot response, you may not get it. Okay. The response can be later also. But never mind, you can go silly, you can talk, you can play, you wherever we are going, express everything. So you have to pour your heart out completely. Like this is what sometimes we feel like, yes, I want to be see, when we are children, we want our child to grow up, right? But when we grow up, we want to become still child. Yeah, because that cuteness, that pamperness, that clear heartness we all want. Yes. So no matter what is there, just be there, play with your child, sing everything, whatever you feel like, but you have to talk with your child. Read reading book is a very good way of building communication skill, and giving explore for the new vocabulary. Okay, when you read book, there is a pattern and there is a way. Okay, some parents come to us and they tell us कि मैम हम बुक तो पढ़ते हैं लेकिन बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो सो जाता है उसमें, हम स्टार्ट ही करते हैं और बच्चे को तो नींद भी आ जाती है. Okay, so see, that is not a way to, मतलब कि हम उस प्रोसेस को कम कर दें या खत्म कर दें. करेक्ट. So we can change our timing also. There is no need कि हम बच्चे, अगर हमें बुक पढ़नी है तो during night time only it should happen. It is not necessary, but it should happen. You have to make sure that it should happen during your daytime. Simple, with a minimum words, minimum sentences, as per the age of the child, you have to read one book. Reading is very, very good practice that will inculcate a reading practice also in child.
आज की जो एरा में ये भी एक चैलेंज है कि मेरा बच्चा बुक से दूर भागता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है. When you start reading a book to the child, automatically his interest towards book reading will automatically develop. Yes, and his not only communication, not only vocabulary, his way of thinking also will change. More exposure, the platform for new words also will be created. Yes, so reading books is a very, very good way of building communication and reading practices also. So hope this is also. Can I share something, ma'am? Yes, sure, Okay. sure. In most of the cases, where people say that my child is, not interested into the reading book, और वो जब भी हम start करते हैं तो वो सो जाता है, ऐसे करता नहीं है. Actually, there is no issue with the child. There is no issue with the book also. The issue is with the method. Okay, let me share my method. What exactly I do and what exactly I encourage others to do. कि जब भी कोई बुक पढ़नी है, whether it is a story book or even the non-fiction या ऐसी कोई भी बुक अगर हम पढ़ रहे हैं, so make it a fun for the child. Like you can read one paragraph or anything and ask the child to do the thing. Like, okay, to express that particular paragraph in an action. Okay, so that will be a kind of story, kind of activity, fun activity जहाँ पे उसको बहुत मजा आएगा. Right, exactly. So that is required, the methodology of using the book. Now that child will be, every evening he will be waiting for that session कि जब भी हम आधे घंटे मैं और पापा वो जो स्टोरी है वो करते हैं और स्टोरी को हम एक्ट में बदलते हैं. स्टोरी टू वो it will convert into the play, right? Okay, so it is a really good suggestion for everyone who would like to inculcate the reading habit to the child, to make it fun in such a way. Okay, yeah, that's what I wanted to share. Thank you. Yes, I want to also share something with permission. Yes, Vishwa, please go on. Yes. With child connection is most important. Firstly, we try to correct them, but first is connection. Connect after correct is a proven sentence by child psychologist. फर्स्ट आपको अपने बच्चे के साथ, अपने चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना है बाय एनी अदर टेक्निक, whatever you want, or the child wants to play with you या sing with you or anything other. उससे क्या होगा कि वो आपसे जितना ज्यादा कनेक्ट होगा, आप उससे उतना ही ज्यादा उतनी इजीली आप उसकी कोई भी गलती को करेक्ट कर सकते हो. उसको समझा के, उसको प्यार से उतना ही जल्दी आप उसको करेक्ट कर सकते हो. विदाउट कनेक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल. Yes, Vishwa, very good. And how the connection and correction will happen? Yes. When you have a good bond with that person, it is easy to accept. Okay, if other person tells me this is your mistake, I'll just ignore also. Yeah. Okay, that is your perspective. I'm not concerned about it. You are just keep telling me. But if you know that person is for my some good for building my goodness also, so I will accept it. Yes, very good. And very good, very nice, कल्पेश जी. what आपका जो आइडिया है वो बड़ा, मुझे भी एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा कि हम जो स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, if possible that character we can do it live also, or that atmosphere what is happening in the book. Okay, not exactly, but somewhere we can just do a role play as well. So exactly. it becomes a real life connection. Exactly. So let me just tell you in little bit description. I was reading the book of Mahatma Gandhi. Okay, Mara Satyana Prayogo, means the autobiography of Mahatma Gandhi, and that's where my child came to me and he was like, I also want to read and all these things. And it was quite difficult कि non-fictional autobiography में उसको कैसे, मतलब उसको समझ में भी नहीं आएगा मैं जो बता रहा हूँ, उसको स्टोरी में मजा आएगा. Then I thought that let us have just one sentence या फिर एक पैराग्राफ लेते हैं, and I'll ask him कि जैसे गांधी जी ने किया वैसे आप करके बताओ तो कैसा होता है, क्या होता है. आप you pretend that I am the अंग्रेज अधिकारी and you tell me you are the Gandhi.
okay, Mahatma Gandhi, and you tell me how you'll express about all these things. And that's where the fun started. Okay. Yeah, so that is the thing. मतलब कई बार हमें लगता है हम ना we feel like कि we want to give so much, मतलब पूरी एक बुक हम पढ़ ले या फिर एक पूरी स्टोरी ना, it is not like that. It is just to sow the seed into the mind of the child, that book is interesting, book is really fun, book is really anything, मतलब so वो वहां पे हम इस तरीके से कर सकते हैं. Fantastic. Very good. Very good. Such a nice and implementing trick and technique what we can adopt. Yes, parents, are you all there? Will you adopt this technique? Can I get some answers in comment box? Not only reading, life characteristics also can be adopted in day-to-day life. Yes. So Yes. this will encourage them to build interest in books and in reading also. So today's workshop is a bonus for every parent actually. So it is not about communication skill, it is about reading skill also, how to develop reading skills, some glimpse of that as well. So for all the parents today, those who are there in this room, it is a bonus workshop. Yes, in one workshop there we are getting two different segments. Okay, and if you have any kind of question on all these things, parents, then we will be covering into the question answer session. I got some of the questions, some of the intrigues into the chat, so that's why I'm saying. And yeah, just be with us. And हमारा reading का हमने एक workshop किया था. You remember, Anita ji? We have done one workshop in the reading, and that you people can get into the YouTube channel also. Okay, just find us onto the YouTube like Spartan Parenting Academy, and you will find all the workshop and all the things. Yes, Anita ji, go ahead. Yes. So जैसे कि हमने कहा, you can click on that YouTube channel link and you will get more details about reading skills. Okay, fine. As today's presentation is shows, let's go silly. So let's go silly. Today we are working with numbers. Okay, so let's see how fast you can say reverse numbering. Okay, जैसे अगर मैं तो हिंदी में ही बोल दूंगी, ठीक है, 10 से आपको 10 to 1 रिवर्स फॉर्मेट में बोलना है. ओके, नॉट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, रिवर्स में बोलना है. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, so you can unmute yourself, and anybody wants to try, it's okay if you make a mistake. There is no harsh as such. It is just an activity to add some element words. Just a minute, just a minute. Swala ji, thank you very much for your being so active. Madam, I got some tweak into this. Okay, we got the people from different state and they are having a different languages. Okay, and okay. why don't we do some kind of activity? जो भी लोग अभी ये करना चाहते हैं, okay, we will have 2-3 participants. अगर possible है तो सबको लेंगे, कोई issue नहीं है. Then they will do this activity. They will spell out the numbers in the reverse order, and that too in their own language. Understood. I got it. Okay. So आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको बोलना है नो वन विल जज. हमें पता नहीं आपकी लैंग्वेज क्या है, आप गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, बट वी जस्ट वांट टू हैव सम फन एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. ओके, सो हु वुड लाइक टू स्टार्ट? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 in Kannada. Very good. I know this. Kannada I know. So I know you are correct. Wonderful. Yes. Anyone else would like to participate? Yeah. Very good. Yes, Riddhi ji. Yes, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Very good. The Gujarati. Wonderful. Great. Yes. Great. Anyone else would like to? Yes, Walaha ji, would you like to? एंड अगर आप हिंदी में तो कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज होना ही चाहिए. इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, दैट इज आल्सो फाइन. इन इंग्लिश ओनली. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Fantastic. Very good. Actually, I am doing for my child from 5 to 6 months. So I also get practice. Okay.
So as we mentioned in one of the workshop, parenting is what first we have to learn, we have to correct ourselves. That is where we can implement that. So that is what happening. Very good. A big clap for Swelana ji. Okay, next who wants to try? I think Varinder ji Thank wants to try. Yes, Varinder ji, would you like to try? And it is not a compulsion. It is just, having some fun activity with everyone. Yes. Okay. Great. I believe we are good to go now. Yes, yes. Fantastic. So let's go for the next. Yeah. Let's child understand words before use. I think most of these things what we have already covered. Let the child understand what is that, what he wants to say, what is that means of that word, okay, before use. Okay, that will happen with repetition. When you repeatedly do something, see, for every action, for everything, there is one specific action. See, I can't say I want to drink. This is a wrong action, right? It is an eating action, isn't it? Drinking is this action. So this action I can't, so I want to drink. Yeah. So like that, the child has to understand what is a correct action of that particular way, of particular expression and particular activity or particular need of that child. Yes. So once we do, the child will understand that as well. And that is where the child will use the correct gesture and expression. Okay. So we have to keep constant. So that is where our repetition, our practice will give that give child to understand it well. Okay. So Hello. our instruction. Hello, ma'am. Am I audible? Anita ma'am, are you on mute? Yes. Am I audible to everyone? Yes, now audible. But आपने जो एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में वो वॉइस ब्रेक हो गया था और फिर आप म्यूट पे चले गए थे. Sure. Yes, Vishwa. Yes. So keeping our 1 second, I'll just play the presentation again. Yes. Yes. Keeping our instruction is very simple, is very, very important. Okay. At the age of where the child is still exploring new words, new vocabulary, multiple instruction is very difficult for child to follow. Yes. So at a time, one expression, one instruction, but yes, you can use it's not a standard way of doing it, but yes, in a day we can use one new word. Okay, we can introduce one new word, new feeling, new expression. Once the child get hold of it, once child knows where to use, how to use, then you can use the next, you can introduce the next word or expression. Yes, because what happens in case too many things, too many expression and too many instruction will give to child, it is a confusion for the children. Okay, their brain, their stimulation is still happening. Too many instruction, too many words, we cannot, they cannot take it. Okay, so that will lead to confusion. Simple words and instructions are very much important for child to express and communicate it well. So it is again suggested that we can use one word every day. So one word every day is the sense
if you introduce one word today, okay, in repeatedly you have to use it 3 to 4 days or 5 days, depending on how the child takes it, what is the child's capability of grasping that word and using that word. Okay, for example, if child is asking for water, okay, give me water, so you have to use repeatedly with the proper action also. As I told you, this cannot be action of water, this can be the action of water. Yes, with a proper gesture, expression and action. If the child start using that word, then you introduce some new word, then again introduce one more word. That is where slowly the communication builds. That is where the slowly communication takes place. Yes, and one more thing I want to add here, in case of any see now, as per the today's world, there are certain challenges also for the child to accept and follow. Okay, in case parents, it is again age which is been there in scientific facts also, and in data also. In case child is not able to communicate during the at the age of near about 3, for whatever the reason is, okay, we are talking about the building of communication. But in case the child is not able to make sounds, okay, near about the age of 3, that is where it is alarming. So we still cannot keep on trying, repeating all our words, sounds and everything. That is an alarming age, that is an alarming point, that there we have to really take some steps. Show child to doctor, take him to the doctor. In case of any other delays or something is there, you have to take care of this. Okay, so that age is near about 3. In case child is near about 3, if the child is still with some minimum sounds only, okay, the vocabulary has not builded, the child has not started using words, the child has not started communicating the expression and thoughts and all, that is the age where you have to take child to the doctor as well. Okay. Okay, let's go to the next one. Okay. Now, next and the last segment of today's workshop is, our children are our friends. We are friends for our children. No one can know our children better than us, better than you. Yes. So that connection, that bond has to build it in that way, in such a way that they are being our children. They can be expressive. They can build their communication. Today's world is actually completely with communication. We want our children to build their communication skill. But today's world challenge is that most of the families are nuclear family. Earlier, what has happened? Child has exposure to different, to talk to different mindset of people in family only. Dada hai, dadi hai, uncle hai, auntie hai, sibling hai, many visitors, relatives and all. Yes. So we as a parent we only have to take the initiative to build that communication skill of our children, because they don't get much of exposure. Yes. So that is again, anything dealing with the children is a slow process. But yeah, our persistence and consistency will give us that achievement, will give us that goal also, where the child can speak, where child can communicate, where the child can express their feeling so well. Yes. And we are all looking for that. Yes. So I hope this workshop was helpful for each and every parent here. Now, we have special gifts and question and answer sessions towards the end. So please be there till the end of this workshop. So I'll hand over to Kalpeshji now for further. Thank you very much, ma'am. And yeah. Okay. So everyone, how was this thing? मतलब आपको कैसा लगा अभी तक हमने जो बात की? I want to ask you some of the questions, because
we will be having a separate session जिसमें हम आपके जो question and answer है उसको हम लेंगे. But before that, I would like to ask you that what kind of challenges you people are facing regarding the communication with your child. मतलब आपको क्या लगता है, आपको किस तरह की challenges आ रही है? You can do one thing. You can unmute yourself and speak out, and you can also do one thing. You can share with us into the chat box. And Vishwa, can you please help me into the chat box? You just go through the chat box and let me know what people are sharing with us. हमारे साथ क्या लोग share कर रहे हैं? Yes, everyone, can you please share your views? Yes, Rachna ji want to say session. Just a second. Many okay, Rachna ji session है. हाँ, yeah, please, Vishwa, Rachna जी जो कुछ भी लिखा है, please. Session has got me many ideas about the activities I can do with my child as we are dealing with speech delay. And ideas about the activities I can do with as we. Okay. Okay, great. It's great. Anyone facing any issues with the communication with their child regarding, yeah, speech delay is one. We got it covered. उसकी हम activities के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Anyone got any other idea, any other challenges they can share? We can specifically discuss about the same. Question answer session अलग से ही रहेगा, but इस topic के बारे में अगर आपको कुछ share करना है तो. Rishita ji say. My son has no focus, so difficult to make him understand. Okay, great. So basically, Rishita ji, you are saying that your child is not having focus. एक जगह पे वो focus नहीं रहता है. And let me tell you, when you were the child, you were also having the same. Your parent might be feeling the same case. Okay, so बच्चे उसी के लिए होते हैं, वो चंचल होते हैं, तो it is quite normal. So what we need to do is we need to be the child and we need to हमें इस तरह से communicate करना है कि उसको fun लगे. हर एक चीज में fun होना चाहिए. Each and every second from जो पहला दिन उसका दिन का पहला जो क्षण होता है वहां से लेके the last moment of the night, everything must be fun. Okay, so you need to see how you can make it fun. Okay, anyone else have any other question? हम इसमें डिटेल में जाएंगे question answer session में. It is definitely about the communication, but इसमें डिटेल में जाएंगे. But yes, anyone have any other question? Yeah. Didi ji want to say, I difficult to eat any food my child. Okay, great. That will be a separate question answer. Okay, Riddhi ji, no audio. Do you have? मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है? Vishwa, my voice is clear? Yes, clear. Okay, शायद तक रिद्धि जी के पास मतलब audio का issue है. No issues. We will cover that. But yeah, one of the important thing regarding the communication, जैसे हमने बताया, the level of communications are there, the 3 different levels. The very first one is the object, the second one is the activity, and the third one is about the feeling, emotions and expression and all. Okay, so that's where we stand. That's where the Spartan Kids stand, and we build the product which actually help your child to understand the objects, which help your child to understand the activities. Okay, and that's where you can use our products, and these products are the flashcards, different kind of flashcards, and it is not just us, but it is scientifically proven. हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर है. जब हम प्रोडक्ट रिसर्च जब बनाते हैं तब हम उस पर रिसर्च करते हैं, और हमारे पास ऐसे रिसर्च पेपर है, हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट के आउटकम्स है एक्सपेरिमेंट्स के, कि जिसमें स्पीच डिले के केस में, एंजाइटी के केस में, ADHD के केस में, एंड बहुत सारे अलग अलग केसेस के अंदर जो फ्लैश कार्ड है, दे हैव वर्क्स वंडर्स. अगर फ्लैश कार्ड को अगर यूज करते हैं, द मेन इश्यू इज पीपल फील लाइक कि फ्लैश कार्ड को एक ही तरह से यूज किया जा सकता है. But no, there are multiple things you can do with the flashcard. You can play with the child as a creative storytelling with the flashcard. You can make an imagination game with the flashcard. बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो शायद तक आप लोगों को पता नहीं है. But yeah, as you all people right now came into this session, so I would like to give you the gift कि आप हमारे जो फ्लैश कार्ड्स है उसको हम एज अ गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, एंड दैट्स वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्लैश कार्ड्स. जस्ट अ मिनट. या
The pack of 25. This is the new launch product, the combo set. 25 different categories of flashcards आप purchase कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए with the promo code welcome10 for today only. Okay, and that will be having a 10% flat discount जो आपको बाद में कहीं पे नहीं मिलेगा. So if you people are thinking to purchase any kind of flashcard or anything, then you can use this opportunity, and we will definitely help you on how to use this flashcard also. Not only you just purchase the flashcard, but how to use the flashcard, उसके बारे में भी हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, वीडियो सीरीज जो आपको हेल्प करेगा. So this was the first gift from our end which you can use, and our team will share the link into the chat box. Yeah, link is already shared, so आप उसको use कर सकते हैं. The second thing I would like to share is I would like to announce the winner of the contest. जो बेबी फादर कॉन्टेस्ट था वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर इफ यू हैव नॉट जॉइंड अवर व्हाट्सएप ग्रुप और अवर कम्युनिटी इनटू द फेसबुक, कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट इनटू द फेसबुक ग्रुप, या तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, अगर आप शेयर कर पाए प्लीज. ओके, यस, ओके, वंडरफुल. सो ऋषिता जी, आई बिलीव यू आर द मदर. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके ऋषिता जी, yeah, so the winner is Ayansh Shah, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो कॉन्टेस्ट चलाया था. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये कॉन्टेस्ट हम वी आर डूइंग दिस जस्ट टू मेक यू पीपल इंटरेक्टिव, जस्ट टू मेक यू पीपल कम्युनिकेट. सो इट इज नथिंग लाइक कि भाई कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है. वी रैंडमली पिक द विनर, and that's where congratulations Rishita ji, and you will get your gift and all. Our team will be in touch with you. Thank you very much. And the last thing I would like to share is we have a gift for everyone. You can use this ebook, the wonderful ebook. Okay, and this is the tips for improving communication skill in child. You can download this ebook from this link हमारी टीम ने आपको शेयर किया है अभी chat box में. Okay, so yes, with this I would like to open the session for the question and answer. So anyone would like to ask any kind of question right now, we are ready to answer all your questions. Okay, Yes, we have a question in a chat box also. Venkata Abhishek ji said hitting other children issue in my child, due to which he stopped his school at the age of 5. okay, Venkata ji, can you please unmute yourself, or you can come on to the video. We would like to spotlight you ताकि communication अच्छे से हो पाए. Yeah. The point, right? Okay, just let me put you into the spotlight. Yeah. Okay, This yes. is Akash. My child age is 5 years. He left the school because he has some hitting issues in the school. Other children, if he see other children, he get excited. Maybe Okay. because he want to attract, he want to hug them. Something he want to do to the other children. He's more eager to that one. But Okay. teachers and other parents will see in such a way that he is very aggressive, and he don't hit very hard. Okay. Okay. But he is hitting issues, and he won't sit in one place. And of course, my child has been recognized with mild autism. He is undergoing therapy, and he's trying to speak small words here and there now, and we are keeping engaging him in all these activities. But my issue is he's unable to go to school. This is the main problem for me. I'm feeling bad for that one. Very, very Definitely, bad. yes. That is the And right of last right year of we the have child. changed. Last year I changed 2 schools. Another previous year we have changed another 2 schools. Same issue is being repeated, as 2 schools are not accepting this of active mindset. Okay. Yeah, let me come to it. Okay. Is he really, as you question, and your answer is also there in the question only. Actually, you only express that he wants to hug. Okay, Yes. he wants to hug that other child. Okay, but he needs a direction. Okay, see, we know this is hitting. Hurting anybody is hitting, whether the Yes. child knows that or not. That is the way he's expressing his feeling. Yes. Okay, so rather keeping will it give you any solution to keep a child at home?
it will not give you any solution. Okay. Other than that, he will come. His development will be more delayed also, because as we understand that grouping, socialization, and going out is very important as per the age of the child. Okay, there are mild symptoms of autism, what you said. Okay, but what I understand from your what your question, it is not that aggressive that the child cannot be managed. But here what happens now, you have to school has to take initiative to educate, to counsel that child one-on-one also if possible. Okay, that what is the see, there are certain behavior which is accepted, and there are certain behavior which is not accepted, that is unaccepted behavior. The child cannot differentiate between which is this is the behavior which is accepted, and this is the behavior which is not accepted. Okay, through the flashcard, through the role play, through the story, and with a lot of repetition, we have to make child understand that this is the behavior which is not accepted. Okay, that empathizing factor, that empathizing skill, that feeling has to come in child. Then when I do this, the other person is getting hurt. Okay. Yes. So Yes. this is the behavior which is not correct, which I should not pursue. Okay. Yes. So that is where the child has to understand that this behavior is not accepted. But see, as you are saying, you have changed the school. Okay, because of this hitting behavior what he has. But what you have worked, how are you working on this behavior? That is what give you the result. Yes. Changing school is you are not working on the behavior part of the child. Okay. The problem. Okay, don't take me any other ways also, sir. I'm just giving you the clear idea. Changing school will not stop this behavior. Yes. We have to work on the behavior part of the child. Yeah. Yes. How you are working, how we are working, how school has to work also. Okay. So give him more of as we also have flashcard. You have to just connect with Kalpeji whether we have a flashcard for this particular activity also, whether hitting children or pushing child is not a acceptable behavior. Okay. Okay. So you just connect with sir in case we have those flashcard also, that will help child. Role play also will be very helpful for the child. Counsel him, sit with him, and repeatedly you have to tell him. Okay, that is where he will change his behavior. Okay. So hope this will work for you. And see, nowhere in case I'm just giving a small example. For any purpose, if the child is not feeling well, for any purpose, the child has cough and cold or some minor thing or something like that, doctor has prescribed you some medicines, morning, afternoon, and evening. If the child is refusing to take that medicine, will you still stop that giving him? Will you? No, right? You will make some tricks or techniques to give him. Right? So changing school, okay, fine. I don't know how the management and how the school people are. Okay, fine. But the changing school will not give you results. We have to work on his behavior. You have to make him understand what is accepted behavior and what is not accepted behavior. Venkataji, can I ask you a question that which standard he is, or what is the age? He's LKG. Oh, yeah, LKG. Because 5 years is a LKG child, yes. Okay, how many hours he is spending in a school in a day? Currently, we have stopped the school and he is undergoing therapy. We're giving him behavior therapy and speech therapy, and he's behaving very good there. No, he behave very good there. But when he feels bored and he didn't face any attention, he will get irritated and beat the teachers, school children, all these things. Okay. How can we come up these things? This is the only issue. Yeah, the very first thing is if you have any kind of things like if you can he's not interested in the class, he'll
stand up and go outside. Okay. Right. I totally understand. The very first thing is what I understood is he needs the attention. Yes. Okay. Is it that both of you, like you and your wife, both of you are working or anything like that, that you are not able to give much time to your child? Is it like that? No, my wife is not working. Not working. Okay. So I would suggest that you people do some kind of activity where you can be more with your child. As I just shared, the reading, the book and the role play game and all these things, you can use that first thing. The second thing, I'm sorry, but we should talk about this alone only. That's what I understood, Venkataji. Right now, we cannot discuss this point. Okay. Okay, I'm sorry for the same. So yeah, you can connect with us and we will definitely discuss about the same. Okay. Okay. It is not appropriate right now to have this discussion. Okay, because anything whatever you say, the child understand and they react also. So Yes. okay. Yeah. Anyone else would like to share anything? Any question? Venkataji, we will discuss this point once we are alone. Okay. Yes. Yes. Any other question? Sir, I have a question. Yeah. Please. Just a minute. Let me spotlight you. Who is this? This is Swaleha. Swalehaji. Just a minute, ma'am. Can you open your video if it is possible? Yeah. Actually, I'm in kitchen. Actually. Okay, fine. You can ask the question, ma'am. No issues if you are not comfortable. Yeah. मुझे पूछना था मैम सर कि एक्चुअली मैं ही बहुत कम बोलती हूँ. मेरा ही नेचर है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ. मैं पूरा ट्राई करती हूँ. मेरा बच्चा 2 साल 4 महीने का है, तो मतलब उसका सब माइलस्टोन बराबर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कम बोलती हूँ तो शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर उसको मतलब मुझे ही थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे अपना कैसे बढ़ाना चाहिए कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे है ना मैं पहले से ही कम बोलती हूँ, तो डॉक्टर मुझे बोलते कि और बोलो, तो मुझे थोड़ा सा वो ये लगता है कि और क्या मैं बात करूँ अपने बच्चे के साथ. तो थोड़ा आप मुझे टिप्स देंगे तो मुझे इजी रहेगा कि और मैं क्या उसके साथ करूँ. मैं फ्लैश कार्ड्स को दिखा रही हूँ, बुक्स तो मैं स्टार्ट करी हूँ पर इतना वो एंजॉय नहीं करा, फिर भी मैं इसको पढ़ाती हूँ और वो बहुत इंटरेस्ट है फ्लैश कार्ड्स में देन नॉर्मल बुक्स में. वो खुद ही लेके बैठ जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कम बोलती हूँ तो शायद मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ. तो आप कुछ बोल सकते हैं. The very first thing is you. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कम बोलती होंगी. First thing, your belief system. मतलब see, it is not like how much you said, but the tone, the way you communicate. Okay, अभी आप जो बोल रही हैं, I'm not able to see you, but I can definitely understand from your voice, your tonality, that you are a very good communicator. See, it is not like कि अगर आप पूरे दिन बोलते रहे तो you are a good communicator. हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे डॉक्टर वही बोलते हैं आप पूरे दिन बोलो, तो मुझे वो हेक्टिक लगता है क्योंकि मैं बोलती ही नहीं हूँ. See, the thing is here, how much you communicate, मतलब unnecessary भी talks कर रहे हैं, that is not communication. In case you are able to express your feeling, your thought with a person, that is what the communication, that is what it is. तो वो कर रही हूँ मैं. मुझे लगता है कि शायद मैं कम बोल रही हूँ. नहीं, Swaleha ji, तो first thing you change your belief. It is not about how much you talk. It is more about how you can put on your message across. Okay, आप जो बोलना चाहती है, आप जो बताना चाहती है, वो कितना इफेक्टिवली आप कर सकती हैं. ओके, सो बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो लीडर बहुत कम बोलते हैं, बट जब बोलते हैं तो वो उसका मैसेज ना पूरा एकदम आपके अंदर चला जाता है कि नहीं. ओके, एंड वन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर वाज ओशो. अगर आपने सुना हो उसके कुछ आपको वीडियोस, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना कि वो जब बोलेंगे ना तो कुछ चीजें बोलेंगे बट वो एकदम से अंदर चली जाएगी. सो माय पॉइंट इज, डोंट गो फॉर द क्वांटिटी,
गो फॉर द क्वालिटी फर्स्ट थिंग। एंड ये जो आपकी बिलीफ है कि भाई आप नहीं बोल रही है या फिर आप कब क्वांटिटी में बोल रही है तो आपका बच्चा भी कम क्वांटिटी में बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज नथिंग लाइक दैट। द एनवायरमेंट इन विच ही इज राइट नाउ, ही और शी इज राइट नाउ, ओके, वो एनवायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो एनवायरमेंट में उसको बोलने की कितनी जरूरत पड़ती है उतना वो बोलेगा, फर्स्ट थिंग। Okay. And again, as I told you, the three steps as we mentioned, the object, then the activity and then the expression. तो ज्यादातर केस में ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बताते हैं बच्चों को, एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, बट द एक्सप्रेशन, द फीलिंग्स, जो इमोशंस है उसके बारे में हम बताते ही नहीं, हम ही नहीं बताते। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे ने आपसे चॉकलेट मांगी और आपने उसको मना कर दिया फॉर XYZ रीजन, ओके, एंड ही इज राइट नाउ फीलिंग उसको ऐसा फील आ रहा है कि मैं मतलब मुझे कोई ध्यान नहीं देता है, ही इज फीलिंग डिस्करेज और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो हम वो इमोशन का नाम नहीं बताते उसको कि ये आप क्या फील कर रहे हो, राइट। सो अगर वो आप मतलब उस लेवल तक अगर आप कम्युनिकेशन उसका जो बढ़ाएं तो वो ही विल बी एबल टू शेयर हिज मैसेज अक्रॉस, किसी के भी साथ बात कर रहा है तो, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट यस, जो मैसेज है वो समझना चाहिए और सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, मैंने जैसे आपको बताया, ऑलवेज बी अवेयर कि बच्चा अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करे, और ये आपको अभी नहीं, ये आपको ना टीनेज में, उसकी टीनेज में आपको बहुत हेल्प करेगा। एट दैट टाइम मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर फेसिंग दिस इश्यू कि उसका बच्चे ना उसके साथ बात ही नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि दैट इज द एज जहाँ पे उनकी जो हार्मोनल चेंजेस काफी सारे आ रहे होते हैं और दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि भाई इस फीलिंग को क्या नाम दे, इस इमोशन को क्या नाम, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू वर्क ऑन द क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Anyone else would like to ask any question? We are here to answer you all. Yes, Vishwa, anyone else do we have? I believe some of the participants had asked the question into the chat box while the session was going on. हम जब बात कर रहे थे, सेशन जब चल रहा था, किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो कवर हो चुके हैं कि नहीं कवर हो चुके हैं। अगर नहीं कवर हुए हैं तो हम उसको कवर कर सकते हैं। ओके, और मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस यस डेफिनेटली। हु इज दिस? स्वालेहा। या स्वालेहा जी, बताइए। सर, जब मैं अपने बच्चे के साथ प्यार से बात करूंगी ना तो वो समझ जाता है, ठीक है, मतलब उसको समझाऊंगी करूंगी तो वो इजीली समझ जाए। और आई एम वी आर इन न्यूक्लियर फैमिली, ओके। तो अगर सपोज मैं गुस्सा हो गई, ठीक है, अगर मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने उसको गुस्से में बोला तो वो मतलब स्टार्ट कर देता है रोना। हाँ, और समझने की कोशिश करता है, पर जैसे मैं प्यार से समझाती हूँ उसमें नहीं समझता। तो वो कैसे मैं अपने आप में सुधारूं कि मतलब हमेशा तो मैं प्यार के मूड में ही रह नहीं सकती। मतलब उसको मुझे बहुत सा, हाँ, ओके, तो मैं उसके आपको ऊपर मैं कैसे वर्क करूं? ओके उसके ऊपर आपके लिए एक्टिविटी है। सी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया है, बहुत सारे बच्चों के साथ टाइम बिताया है, बहुत सारे लोगों के साथ हमने कन्वर्सेशंस की है, और मुझे एक ही चीज पता चली है, पेरेंटिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो पेरेंट्स को करना है। इट इज नॉट अबाउट द चाइल्ड, ओके। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो 100% संपूर्ण है, ही इज लाइक गॉड ओनली, ओके। उसको जो कुछ भी बनाता है वो हम ही बनाते हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अवेयरनेस आपको बढ़ानी है, तो काफी सारी स्पिरिचुअल कैंप्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए उसके ऊपर आप वर्कआउट कर पाएंगे। बट द सिंपल एक्टिविटी आई वुड सजेस्ट इज एवरी डे इवनिंग एक डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें यू जस्ट कट डाउन योर, मतलब आपका जो पूरा डे है शेड्यूल, एक आवर में आप उसको शेड्यूल को आइडेंटिफाई कर लीजिए। लाइक से फॉर एग्जांपल 6 to 7, 6 बजे आप उठे तो 6 to 7 हाउ वाज योर फीलिंग, आप कैसा फील कर रही थी। 7 to 8 हाउ वाज योर फीलिंग, 8 to 9 हाउ वाज योर फीलिंग। सो एक दिन बैठ के, मतलब आप एवरी इवनिंग यू जस्ट राइट इट डाउन,
आई बेट कि विद इन 1 वीक आपकी अवेयरनेस काफी बढ़ जाएगी कि आप किस तरह से फील कर रही है और आप कितना गुस्सा करती है और कितना प्यार से बात करती है और आपको क्या करना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही समझ जाएगी कि गुस्सा करने के टाइम पे ओके मुझे शाम को लिखना पड़ेगा राइट। अच्छा, राइट ओके राइट राइट। एंड यू विल बी अवेयर कि नहीं 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 मुझे प्यार से बात करनी है, लेट मी हैव अ सो that is a activity of awareness which you can bring into yourself. Okay, Thank you so much, sir. I will do that. you're welcome. Yeah. I have a question, sir. Yeah. Please go ahead. If you This, can open your camera, it would be great. yes, this eye contact is very less with you, and how can I improve? Actually, he is diagnosed with autism spectrum disorder. I'm going for therapy classes for him. Any suggestions, please? Anita ma'am, can you please take this question? Yes. Can you please repeat the first of the question? I got to know that child Eye is going contact. through the autism Eye spectrum contact disorder. Yes, he is diagnosed with autism spectrum disorders from past 8 months. We are getting him to Eastern Hospital for the treatment. Okay. I'm trying. I what else can I say? To give eye contact, and social interaction is also very less with him. Okay. Rajeshwari ji, you might need to repeat the question because your voice was so breaking. Am I right, Anita ji? Yes, actually. Yeah. आपको फिर से repeat करना पड़ेगा. Sorry. You need to repeat the Hello. question. You were not audible in between, ma'am. So I want to know how to make eye contact with the kid and to improve communication, social communication, interaction. Okay. So as you said, he is under the a spectrum also. He is diagnosed with autism spectrum. So basically, these are actually the symptoms. Okay. The child will not do much of eye contact. The child may not respond for name calling. The child, whatever the symptoms what he has, once you are going for therapy. But his IQ is very much higher. Its IQ is very much higher. He can draw some imaginative things. Some things he sees, he immediately comes and put it on paper, and with the correct color he'll do. Okay. He's actually writing lyrics for the songs, what he has learned. Okay. I'm making him to read so many shlokas because he can read English and Kannada. Okay. Okay. So can I suggest you something? Can you give me an answer that what kind of activities child like a lot? मतलब कौन सी activity वो ज्यादा करते हैं उसको पसंद है? Physical activity, some playing like things, and with this flashcards and objects matching things. He's able to do jumping things. He's liking jumping things very much. Okay, wonderful. So what I would suggest is, see, ultimately what you want is, for, as you just said, eye-to-eye contact, you need the improvement in the eye-to-eye contact, you need the improvement in the communication. The best way you can implement in your life is to have to gather the kids, multiple kids, okay, 4, 5, 6 kids, his friend and something like that, and you design a game, मतलब कोई भी हो सकता है, any game or sports or something like that, and you make them understand how to play the game, okay, and ensure that there is it is a kind of team game, okay, where two child need to communicate with each other, okay,
and then they can do something like that. So this kind of activity, you will get lot of such activities onto the internet. You will get lot of such activities onto the books also. Okay, so you can use this, and you can try this method, and it will definitely help. One more thing I would like to tell you, that do not get discouraged by the just symptoms of this disorder. Okay, because your child is having a great the art, great IQ, great art, and all these things, whatever you just said. Okay, so it is actually the normal child is not able to do this. As you just said, ki lyrics likh rahe hai. He is able to write the lyrics. So normal child is not gifted with all such qualities. Okay, so your child is really special, and you need to give the special attention. Just you need to understand how you can make him communicate. Okay, you need to provide the environment, nothing else. And as you just said, jumping, he likes jumping a lot, he likes the physical activity a lot. Then just do one thing, you involve the physical activity with the communication, and he will enjoy, and he will definitely communicate. Okay, That's you very much. actually Thank correct you. way Thank you and so much. techniques. Yeah, that's a correct way and technique. Smaller group will help him. Smaller group, if you give him a bigger group, he will not adjust in that smaller group. For will 4 to 5 kids, is that right? yes. Just aim that 3 to 4, Yes, sir. 4 to 5 kids, that much only, and everyone will be. It is a constructive play. It is going to be a structured play. So one person will be an instructor, and the other person has to follow. Like passing the ball, like that kind of activity. That kind of, or passing any messages also. As So you then what said, happens while here, communicating, he will you communicate give. also. He will try to communicate also. See, whispering also, like one word you have to whisper in his ear. He has to Okay. whisper to the other person, and then lastly it goes to that person. Last one. Yeah, like that. There Yes, are ma'am. many activities. There are many ideas. Okay. Thank you. Yeah. Welcome. Thank you, sir. Thank you, ma'am. You're welcome, then. Yes, anyone else would like to ask any question? We are here to answer you. I think Riddhi ji want to ask any question. Yes, Riddhi ji, can you please switch on your camera? We would like to see your smile, and we would like to spotlight you also. Before questions around, they ask one question. हेलो Yes. यस सर मैं मेरी बच्ची को सुला रही थी मैं ऑडियो में अभी 2 मिनट बोलो। में फोन करती हूँ बोलो, मुझे काय बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं लेकिन अभी क्या है कि उसको सुला के पूछती हूँ No issues, ma'am. yes Anyone else would like to have any conversation, any question, anything? We are here to answer you. So yes, meanwhile you can share your topics. जो आपको लगता है कि हम आपके साथ उस टॉपिक पे वर्कशॉप करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. Yes, Venkata ji, if you are alone, then we can discuss the question again. I am really sorry for the same, because I would not like to discuss the matters. जब हमारे साथ when we have the kid in front of us, we would avoid such kind of discussion. Okay, and there is a special reason behind the same. Just think about it. If me and Anita ji is having a discussion, मैं अनिता जी के बारे में ही बताऊं कि अनिता जी आप ये बराबर नहीं कर रही हो, वो बराबर नहीं कर रही है. Okay, you are not doing this thing good. You are not good at this thing, not good at this thing. So that will actually make the things worse, and that's why we avoid such kind of discouraging statements. What we are telling for the child. Exactly. So yeah, definitely we are doing it for the constructive purpose, but even though we would like to avoid such kind of conversation in front of child. Yeah. Yes. So I was asking you people if you can share any kind of topics you would like us to cover into the workshop. Then we will definitely work on to the same, and you can share your topics into the chat box. We are covering the topics about the parenting. We are covering the topics about the child development. We are covering so many things like brain development and physical development,
एंड स्पीच डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं. यू कैन ऑलवेज आस्क अस वट एवर पॉइंट इंटरेस्ट यू, वट एवर topic interests you, and we can make a workshop on out of the same. Okay. Meanwhile, Venkataji, if you are you there? And if you would like to start the conversation again, whatever we were discussing. हेलो सर, मैं आई? Yeah, you can. सर, मेरी एक 1 साल की बच्ची है और एक 6 साल की है. तो उसमें क्या है, वो 6 साल की है, वो तो अभी थोड़ी मैच्योर हो गई है, लेकिन वो 1 साल की बच्ची है, उससे हिसाब से तो वो ज्यादा ही होगी. पर उसको क्या लगता है कि जब भी हम इसको प्यार करते हैं, इसको संभालते हैं, तो उसको एक माइंडसेट हो गया है कि सब दादा दादी सब न्यूक्लियर है हम, तो सब लोग उसको ही प्राइवेसी देते हैं. हर टाइम ऐसा होता है. और स्कूल जाती है तो उसका ये प्रॉब्लम है कि अभी फिलहाल दोपहर की स्कूल है, अभी आफ्टरनून टाइमिंग है, तो थोड़ा उसको सफर करना पड़ता है नींद के साथ. वो उसको लगता है कि मैं थक जाती हूँ. सुबह उठती है, फिर खाना खा के निकलती है, शाम को 6 बज जाते हैं. वो अगले साल तो नहीं होगा, पर ये 3 साल उसके बीमारी में चले गए. इसका वो क्या ड्राई कॉफ का प्रॉब्लम हो गया है. उससे भी वो इरिटेट हो गई है नेचर से. रात को आती है, वैसे वो बहुत बोल नहीं सकती, पर क्या उसको ऐसा फील होता है कि मम्मी मुझसे दूर हो रही, मम्मी मुझसे दूर हो रही हर बार. हाँ, Exactly. खाना खाने में पूरी हो गई है. फिर सब में ऐसा बोल रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तू ही करा, तू ही खाना खिला, तू होमवर्क Exactly. करा, सब मुझ पे डिपेंड Seeking करती है. your attention. See, she's या genuinely या seeking your attention. Okay. I हाँ. have observed this phenomena so many times. मतलब सिर्फ आपके यस केस में नहीं, मेरे खुद के केस में भी मतलब होता है. यस And we यस are unconsciously we are doing this. Let me tell you यस. what I understood up till now. अच्छा, आपका क्वेश्चन अभी बाकी है तो प्लीज फिनिश. नो नो उसके नो, बाद ये वही प्रॉब्लम है. आप प्लीज से. ओके. तो जो मैं समझाऊं, अनीता जी, इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे कहीं पे करेक्ट करना. मैं जो समझ रहा हूँ उसको, Sure, sure. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है. सो व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, हमें ऐसा लगता है कि जो छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है, यंगर वन, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है. वो हमारी सबसे बड़ी गलती है. हमें ज्यादा ध्यान देना है बड़े के ऊपर. सही इनफैक्ट बात. हाँ, क्योंकि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ. फीलिंग के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे मुझे कोई ध्यान नहीं देता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सारी चीजें वो समझ रहा है, जबकि अपनी छोटी बच्ची है वो इतना नहीं समझती है. सेकंड थिंग इज, योर फिजिकल इंटरेक्शन इज मोर विद द बिगर चाइल्ड. मतलब उसके साथ आपका फिजिकल इंटरेक्शन ज्यादा होगा. फिजिकल इंटरेक्शन छोटे बच्चे के साथ कम होगा. राइट. हम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ज्यादा क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे, बिकॉज दे आर स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन ना. मतलब वो स्वर्ग से अभी आए हैं हमारे पास, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा स्वर्ग से कोई चीज आती है तो. राइट. जैसे जैसे वो पुरानी होती है चीज, हमारा अटेंशन ना थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है. ओके. राइट. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उसको हमारा टाइम अब बहुत कम चाहिए एक्चुअली. बट हम ये समझते हैं कि उसको ज्यादा चाहिए, उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, उसका ये करना पड़ेगा. बट लेट मी टेल यू, आपकी जो छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, वो सबसे ज्यादा सोते हैं पूरे दिन में. तब आपकी जरूरत भी नहीं है वहां पे. सो एट दैट टाइम जो वहां पे आपको टाइम देना चाहिए, वहां पे से जो टाइम आपका बच रहा है, वो ज्यादातर टाइम आप क्या करते हैं, आप अपने रूटीन लाइफ में बिजी हो जाते हैं. अपने बड़े बच्चे के लिए आप ज्यादा टाइम नहीं देते. नहीं देते. सही बात है. वो सोती है तो मैं काम करती हूँ. एग्जैक्टली. सही बोल. हाँ, आप यस आप यस. मुझे ये बताओ कि अगर वो जगती होती तो क्या आप वो काम करते? क्या आप नहीं तो करते? नहीं करती ना, क्योंकि उसको खाना खिलाना होता है, ये सब करना होता है. नहीं, वो तो सही बात है, आप एग्जैक्टली. बोले तो तो मैं उस. वो ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आपके बच्चे में बढ़ता जाता है, और आगे जाके सिर्फ आपके बच्चे और आपके रिलेशन के ऊपर नहीं, बट उन दोनों सिबलिंग के रिलेशन के ऊपर भी काफी वो खराब असर करता है. सही बात है. Correct, सही बात. correct. राइट. सो व्हाट माय सजेशन इज वन थिंग. यस जितना सर. प्यार से आप उस बच्ची को, उसके लिए कुछ भी चीज लाते हो, तो पहले इन जो बड़ा है उसके लिए लाइए, पहली चीज. ओके. कोई भी चीज दो आनी चाहिए. पहला इसका आना चाहिए, उसके बाद छोटी बच्ची का आना चाहिए, और उसको ही पहला देना है, सबको मिलके. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, घर के सबको मिलके उसको देना है. सेकंड थिंग इज आप ना उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें. हम ना कहीं पे ये जर्नी में भूल जाते हैं. हम छोटे बच्चों को काफी अप्रिशिएट करते हैं, वो कुछ भी स्माइल भी कर दिया, अरे वाह कितना अच्छा स्माइल किया है. राइट. दैट सही यू आर बात. डूइंग
हाँ, you are appreciating that small kid, हमें अच्छा लगता गलती ज्यादा याद दिलाते हैं उसको कि ये किया वो किया, पर वो है। नहीं करते सबको। सही बात है, आपने बोला एग्जैक्टली। सही बात। तो बड़े हम बच्चे को अप्रिशिएट करना आप शुरू करें ज्यादा से यस ज्यादा। यस ओके। सर, यस। एंड इंटरेक्शन, ऐसी इंटरेक्शन उसके साथ रखे कि उसको ना मजा आए, फन लविंग इंटरेक्शन, उसको फन की ज्यादा जरूरत है। ओके। और सेकंड थिंग, मतलब थर्ड थिंग जो कभी भी मत करना, ये मतलब बहुत खराब एक्सपीरियंस है मेरा, बच्चों को खाने के लिए फोर्स मत करना, स्पेशली इस एज में 5-6 साल हाँ साल के। हाँ हाँ, सही बोला सर, वो वहां तो। वहां से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वही आपको बता रहा हूँ। वहां से हाँ हाँ। ये होगा कि वो चीज ना लेके पकड़ेगा वो बच्चा, मुझे खाने के लिए ये बोला जाता है, वो बोला जाता है, वो बोला जाता है, और ऐसा आप दिन में 10 बार बोलते हैं, राइट? एंड हम्म। वही सारी चीज बाद में बिल्डअप होती है। सो हम्म। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है कि 6-7-8 साल के बच्चे को एक्चुअली खाने से ज्यादा खेलने की, एक्सपीरियंस की, अलग अलग चीजें सीखने की वो ज्यादा जरूरत है, वो वही करता है एक्चुअली। बट यस हमें यस। ज्यादा पड़ जाती है खाने की, इसलिए हम उसके पीछे लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है आपका क्लैश, मतलब आपके दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो। एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, सही बोला सर। सो कोई इस पूरी दुनिया में भगवान ने कोई भी एक ऐसा जीव नहीं बनाया है कि जिसको ये पता ना चले कि उसको भूख लगी है, और जिसको ये हम्म पता ना चले कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। ओके, हम्म। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, यस इतना यस। इंश्योर कीजिए कि जब वो खाए तो प्रॉपरली खा ले, ये इंश्योर कीजिए, बट उसके पीछे मत लग जाइए बस। नहीं, सही बात है, नहीं। Very थैंक यू सर। great expressed, Kalpeshi. ये बस खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हाँ इतना अच्छा एक्सप्रेस हुआ। हाँ, एक्सपीरियंस आपके मेरा में भी से है। हिम्मत आ आई गई। हैव 2 यस चिल्ड्रन, यस। सो दिस इज अ सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट होता ही है व्हेन वी हैव द अदर बेबी, द फर्स्ट बेबी फील इनसिक्योर। और मैं इसमें बस एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आप अपने बड़े बच्ची को उसको सिक्योर फील करवाइए, वैल्यू हर इमोशंस एंड मेक हर फील सिक्योर दैट यू आर देयर बट द बेबी इज स्टिल स्मॉल। जहां पे मुझे बेबी का करना है वो मैं करूंगी, but you are also there, your emotions are valued well enough. ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल एड ऑन So मैम, that way थैंक यू। she will feel happy and secure. वो फिर उसका वो जो कॉन्फ्लिक्ट है बिल्ड एंड शी विल हेल्प यू, कि बेबी को वो एक्चुअली हेल्प करेगी, बेबी को भी हेल्प करेगी आपके डेली कुछ चोर्स में। बेबी के लिए भी जो भी करना है उसके लिए भी जो बड़ी बच्ची है वो आपको हेल्प करेगी बल्कि। यस मैम, सी यस मैम, यस सी डू इट एवरी टाइम, हेल्प करती है और बोलती है मैं उसको संभाल लेती हूँ, तू कर, वो सब ऐसे तो बहुत हेल्प करती है। पर जब ऐसे बोलती है ना, गुस्सा आता है, ऐसे इरिटेट होती है उसके स्वभाव के अनुसार, तो सब छोड़ के चली जाती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम ही कर, ऐसे। ये वो सर ने बोला ना कि ये एज है, उसको फोर्स मत करो, उसको जो करना है करो, प्यार से समझाओ, वही सही यस बात। हाँ हाँ। एग्जैक्टली रिद्धि जी, वो सिर्फ वो छोटे बच्चे ही नहीं, हम भी यही करते हैं, मतलब हमें अगर गुस्सा आए तो हम भी ऐसी तरह से बिहेव करते हैं। सो वो काफी अच्छा है, एंड यू गिव हिम और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्यूट वन। Okay, so yeah, this way you can tackle this session, tackle this particular challenge. Yes, yes. Thank you. Yeah, anyone else would like to ask any question? I'm here, Dr. Saab. Excuse me, Varinder ji, I am not a doctor. हाँ. First thing first. Okay. Okay, sorry, I'm so sorry. Okay. Let me tell you that I am just a child development enthusiast. मुझे बच्चों बहुत के अच्छा लगता डॉक्टर। है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों को समझना और उसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है। सो आई एम अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंथुसियास्ट। ओके। यस, Thank you so much, sir, for introducing yourself. I am Varinder Singh. I am working in Ultratech. I'm into HR. Actually, we have a daughter of 2 years, 2 months, you can say. And we are facing matlab, like we feel like maybe matlab, it's not a issue, but we feel like she is lagging behind in her speaking, her vocal competency, you can say. ओके। मतलब Vocal codes. 2 साल स्पीच 2 डिले। महीने की हो गई है, स्पीच डिले टाइप हम लोग को ऐसा फील हो रहा है।
वैसे डबल लेटर वर्ड्स जैसे बाबा, पापा, मामा, नाना इतना बोल रही है. बैबलिंग ऑल्सो शी कीप्स ऑन डूइंग ब्ला 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 ब्ला. ये मतलब शी ट्राइज टू व्हेन शी इज प्लेइंग शी कीप्स बैबलिंग Okay. अपने हिसाब से. मतलब मम मम्मम मम्मा, शी कैन डिफरेंशिएट थिंग्स. फॉर वाटर शील से मम्मम, फॉर मम्मा शील से मम्मा, पापा. शी शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. शी मतलब आइडेंटिफाइज एवरीथिंग. मतलब अपने हिसाब से अपने इशारों में सारी बातें समझा देगी क्या चाहिए. मेरे को किचन में उस शेल्फ से वो चीज चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, वो खिलौना चाहिए. सपोज अगर ऊपर अगर 10 खिलौने लगे हैं तो उस 10 में से ये नो, ये नो, ये नो, ये हाँ ये चाहिए. मतलब एवरीथिंग इज गुड. थोड़ा सा हम लोग को जो है उसका वोकल डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले लग रहा है, स्पीच डिले. इसमें हम लोग कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं. कभी कभी अच्छा ये भी होता है, सपोज वी टेलर सपोज कुछ मांग रही है एंड वी टेलर की बोलो, मतलब Yes, yes, ट्राई you टू से encourage her. You encourage her. Huh. हाँ. बट शी मतलब कभी कभी बहुत रेयरली शी ट्राइज टू स्पीक एनीथिंग एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स शी स्टेज मतलब डम, मतलब चुपचाप देखेगी. एंड कभी कभी तो शी विल से कि नो आई वोंट से, ऐसा बिहेव करती है. Wonderful, great. Anita ji, will you be taking this or shall I? Okay, you go ahead, sir. In case I have to add on, I'll add on. Sure, Please. sure. हाँ इतना है. लाइक मेरे ख्याल से दैट्स इट. इतना मैंने जो बोला ये सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया. समझ गया. वरिंदर जी, आई जस्ट वांट टू नो, जो आपकी बेबी गर्ल है राइट? राइट. उसका नाम मैं जान सकता हूँ? चीकू. चीकू, ओके. चीकू इज द फर्स्ट चाइल्ड, एम आई राइट और रॉन्ग? यस, फर्स्ट. ग्रेट, ओके, वंडरफुल. द वेरी फर्स्ट थिंग, ओके, मैं आपको ना आपकी जो प्रोफेशन है उसी के बेसिस पे मैं समझाना चाहूंगा. यू आर एन एचआर राइट? जी. ओके. आपकी कंपनी में जब कोई फ्रेशर आता है, नया बंदा जो अभी तक कभी उसने कंपनी में काम नहीं किया है, एंड यू पुट हिम इनटू मीटिंग के जहाँ पे सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, ओके, वो बंदा कितना बोलता है, कितना अपने इनपुट्स देता है, कैन यू टेल मी? हाँ, he won't interact ही वॉन्ट until and इंटरेक्ट, ही unless he वॉन्ट. gets old. हाँ, right. Human जब behavior है वो तो. एग्जैक्टली जब तक उसके गले तक नहीं आ जाएगा वो कुछ चीजें नहीं बोलेगा. इनफैक्ट ऊपर चला गया, मतलब पहले 3 4 6 महीने तक तो यही होता है. इनफैक्ट आई वॉज इन द वोडाफोन, आई वॉज हैंडलिंग होल गुजरात, तो मुझे पता है किस तरह से होता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसीलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी जो बच्ची है वो फर्स्ट बेबी है, एंड इट इज अ नॉर्मल फिनोमिना कि फर्स्ट बेबी में आपको स्पीच का थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनीवन इन हिज और हर एज जिसके साथ वो ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए. डेफिनेटली ही और शी इज कम्युनिकेटिंग विथ यू, ओके, बट उसको जो एनकरेजमेंट मिलना चाहिए वो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा मिलता है, ओके. अगर आप देखेंगे ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, मेरे खुद के केसेस में भी है, आपका जो दूसरा बच्चा है ना वो जल्दी बोलेगा. जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना 2 साल में, वो 2 साल से भी जल्दी बोलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ही इज हैविंग समवन इन हिज फ्रीक्वेंसी, इन हिज एज, जिससे कि वो कम्युनिकेट करते हैं. कई बार आपको पता भी नहीं होता है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या चल रहा है. राइट, बिकॉज ही इज हैविंग समवन कि जिसके साथ वो अपनी एज के अप्रोप्रिएट वो बात कर पाए. सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. जैसे आपने बताया कि 2 साल और 2 महीने, ओके, जी, very normal, very normal. My child was, Urjit, he's right now 6-year-old, but after 3 years, okay, after 3 years he started to speak, okay, and that is completely fine. That is, and if you want to encourage this thing कि भाई वो ज्यादा बोले, then you can do 1 or 2 things. एक तो आप एक्टिविटी बेस्ड जा सकते हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं, वोकेबलरी वगैरह ज्यादा से ज्यादा वो अंदर जाए ताकि वो बाहर आए, ये हम करते हैं. उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे बच्चों के साथ उसका टाइम जो है, टाइम स्पेंड वो ज्यादा बढ़ा दें. जी, राइट. वो जितना ज्यादा पहला पॉइंट जो आपने फ्लैश कार्ड्स वाला बोला, फ्लैश कार्ड्स तो आई थिंक मतलब 1 साल हो गए, मतलब फ्लैश कार्ड्स के साथ हम लोग खेलते हैं, बट द ओनली थिंग शी डज इज मतलब हाँ मतलब कार्ड दिखा के अपने लैंग्वेज में ता ता मतलब लाइक क्या है, ये क्या है, शी आस्क्स.
लेकिन when we ask her to repeat कि cat, dog, orange, she मतलब Okay. becomes reluctant for that. Okay, no issues. How you can get her excited using the flashcard? Let me give you an example. Okay, जी. you have few categories of flashcards. Okay, आपके पास animal है, आपके जी. पास fruits है, आपके पास professions है. Okay, now you pick random cards and make a imaginative, creative story out of it. जिसके हाथ मतलब हमारा जिसका कोई लॉजिक ना हो. ओके, जैसे कि एक कुत्ता है, वो कुत्ता एरोप्लेन पे बैठ के वो सैटर्न पे जाता है और वहां पे ये सब कुछ करता है. मींस मेक समथिंग आउट ऑफ कंप्लीट इमेजिनेशन ओनली. ओके, तो इस तरह से भी फ्लैश कार्ड का यूज हो सकता है जिससे कि उसको मजा आएगा. एंड दिस सच काइंड ऑफ स्टोरी, सच काइंड ऑफ थिंग्स विल मेक हर इंस्पायर टू इंटरेक्ट. वाओ, वंडरफुल, ग्रेट. वो एक्सप्रेशन देना शुरू करेंगे, वो आपके साथ बात करना शुरू करेंगे. अच्छा, वहां पे ये हुआ, वो हुआ. सो अभी छोटी है, बहुत छोटी है, बट इवन दो ये चीज वहां से इंस्पायर होगी और वो आपको, अगर आप एक्टिव मतलब इस टूल का यूज कर रहे हैं तो की बात कर रहा हूँ, फ्लैश कार्ड वगैरह का यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से अलग अलग क्रिएटिव वे में आप उसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट थिंग्स आर देयर. ओके, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई आप ये कीजिए कि आप मल्टीपल बच्चों को साथ में इकट्ठा कीजिए और टाइम दीजिए. आप उसके साथ खेलने के लिए उन लोगों को गाइड कीजिए. एंड यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर. आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, यू ऑब्जर्व. ओके, और उन लोगों के बीच में यू सी हाउ दे कम्युनिकेट. ओके, आपको पता चलेगा कि धीरे 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 ना उसका एनकरेजमेंट हो रहा है दूसरे बच्चों को देख के. एंड शी विल डेफिनेटली. और हमारे केस में आप एचआर से आपको पता है कि एनवायरनमेंट में अगर किसी को रख दे तो खत्म कहानी. राइट, वो तो है. We are planning to send her maybe in a month or two. We'll start sending her into play group near our place. Yes, definitely. So that will day. And don't feel like she is having a speech day. She is completely fine, 101% fine. That's what I can guarantee you. Even though I am not a doctor. Thank you so much, sir. Thank you for your motivation. Thank you, Yes, ma'am. yes, she's completely fine. If she can say 2-letter words, na, baba, that is the signal, that is a symptom she shows that she is completely fine. It is only the encouragement and opportunity she should get. Okay, Varindaji. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. Okay, great. Anyone else would like to ask any question? We are here. Yes. Okay, once again, I would like to tell you all that we do conduct such kind of workshop every 15 days, and you can share the topics you would like to, you would like us to conduct. And हम बहुत सारे अलग-अलग topics पे already कर चुके हैं, and you can share your suggestion. Meanwhile, if you have anything else we can do for you to make your parenting journey fun, we welcome all your suggestions. Okay, and yes, with this, I would like to, if got okay. Swaleha ji. Okay, thank you. Thank you very much for your appreciation. But if you can, I would like you to turn on your camera and share your experience. Why I'm saying this? We will be recording this and we'll be sharing with other people also. That people are getting benefited with all these things. Okay. So if you would like to come onto the camera. Okay, I believe she is not comfortable. Okay, great. Okay, wonderful. Thank you very much, everyone, for your inputs. And we will keep coming, and हम फिर से आएंगे after 15 days, and we will again, come up with a new topic. I believe Vishwa, can you share the topic, the next topic, with the people who are right now present in the session, जिससे कि वो join कर पाए? Vishwa? I'm audible? Yeah, you are audible. Okay. Any background noises? Are you here? No. That is completely fine. Can you please share what are the topics? Yeah. Yes. About next workshop, this is so our next workshop is on a preschool. Oh, Preschool, a gate of learning. wow. And it is on 23rd day, 23rd December.
So, what is the role of preschool? Why? How can we select right preschool? These are the main topics of that. Okay, wonderful. So all you people who are right now, into this session, you can join this, workshop. हमारी workshop की links जो है हमारी टीम आपको शेयर कर देगी. You can join our Facebook group जहाँ पे आपको इस workshop के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में updates ले सकते हैं. Meanwhile, as a Spartan Kids team member, I would like to take a leave and conclude this session. Anyone would like to share anything? Anita ji, आपको कुछ share करना है? Yes, then for today the workshop was very nice. So many inputs also we got, and I think it is quite knowledgeable for every parent. Okay, that's it. Thank you for your time. Thank you very much, everyone. Have a nice time. Okay, bye bye. Bye bye. Bye. Take care.